Good morning, everyone. So let's talk about today's market starting. I'm going to 1 minute time frame, and this is the confluence where it started today. So let's wait for trading for only education purpose, not any intentions you do. So wait and watch. Rigorous. For only education purpose. Let's wait. 9:21. Wait. Not making trade right now. It's their base price. Cross section will start sorry. Keep calm down. Reversal will be possible right now. Otherwise not. So first wait and watch of crossing where upside here 950 and other things. Not capturing full screen right now. Wait. First making pull back. All European markets are bullish. So reversal make here, and when the breaking today's opening price 24,949.15, then they go offside for 30 to 50 points struggling. First wait and watch. Next movement going to your 1033 as the time price.
Wait, wait, market, breathe. So you will wait. Don't make any trade. Not even paper trade. Just patience. So let's wait. Good morning, below. If you are below, go to hit subscribe and like button. Wait, how chain going to happen? So first you choose to wait. Waiting is the key to success in this market. It's complete waiting.
breaking out the things. Or break it today's prices faster. If this seconds and this minute sustain 24,949 above, if 55, they will go higher, solidly, definitely. This will settle the things, and going down, I don't. So please wait. Not gaining the premiums, 32 to 36. 3,000 profit, under 3,000. So some pressure also have. Let's wait. It's a link up. It's just link. So please wait. Wait. It's crossing here. Look at this. And look at this. This is go to upside. Market notes or what situation? Cross the saffron line, exit your trade on the short entry. So right now it's only a long entry, not short entry. Because of market on their price line, it's an opening price line. So here it is. So some kinds of rounding in the market, then they go up. It's a shooting star. 1 minute time frame. So sometimes markets going downward situation, not making any decisions. Then the boom up. Boom, 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 boom. Go, baby, go. And baby, go. Baby, go. And break this. So it's a hurdle of 24,558.
57। ये ऊपर से क्रॉसिंग आ रही है हाईवे, इसको जैसे ये क्रॉस करके इसकी ट्रेजेक्ट्री को अगर ये हाफ को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर अपसाइड मूवमेंट पूरा बन जाएगा और तुम टोटल प्लस हो जाओगे। 54 54 54 54 24,954 24,056। फास्ट 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 फास्ट। और 1 प्लस में आ गए 20 पॉइंट और ये गया 57 क्रॉस। अब ये रनर कितनी बड़ी बनाता है देखते जाओ। तो ये फंसाने का ट्रैप भी हो सकता है, टकराने का यहाँ से था, बोला था रोड है और ये रोड है तो है, देख लो। उसके ऊपर जैसे ही टकराया घुसने की कोशिश किया, वहाँ से हल्का सा डाउनफॉल दिया। रुकना तो पड़ेगा ना बेडू। ये देख फिर आया पलट के गाड़ी, और इस बार गाड़ी क्या करती है देखो। बट प्रीमियम यहाँ पे डीके होता है, एच कैंडल पे प्रीमियम सबसे ज़्यादा डीके होता है। अब इस कैंडल पे देखो क्या होता है। दूध प्रीमियम खरीदते हैं तो इसमें ये गड़बड़ होती है भाई। तो उसमें ज़्यादा कुछ मार्जिन मिलता नहीं। अभी वहाँ पे 2.5% के आसपास मिल गया इतनी सी देर में। इतने सा प्रिडिक्ट किया था और इतने में से 2-2.5% निकल गया आराम से। ये इस बीच वाली सेफ्रॉन लाइन को जैसे क्रॉस करेगा यहाँ पे दबाव देखो, हर ईच एंड एवरी लाइन का दबाव। ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की दबा की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टूटेगा कितने पे तुम्हारा? 62 पे। 60 तो जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लाख रुपए में 2% की बैटिंग कभी भी निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जाल भी हो सकता है इनका, ऊपर ट्रैप करके नीचे की साइड लेके आया मार्केट को। So go with strict stop loss. So I will make it stop loss just on 11 rupees. If they break it, then I will out on the position. Set the stop loss 11.20 and touches 13 point, okay, wait, 13 14 15 target 15
पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, देख ले। अपन ने वो डाल दिया है, अपना मेरा टारगेट यहीं कहीं है, ये देखो, ये इसको क्रॉस करके निकल गया है। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये है 983। और अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से ये कहाँ तक ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक करना चाहिए। अगर करे तो इसी पॉइंट पे करना चाहिए। ये एक पॉइंट बनता है फिर से इसका। कितने बजे कितने मिनट में बन रहा है भाई इसका पॉइंट? ये 9:45 पे बन रहा है, 71 रुपीज प्लस, 1000 रुपये भी 71 प्लस है, 86 क्रॉस कर गया। तोड़ दिया है मार्केट साइड, नीचे वाली ट्रेजेक्टरी में आया कुछ समय के लिए। चाहे अवेलेबल वीडियो ये उस कैंडल से ऊपर सब्सक्राइब अगर कर गया तो फिर कर गया। कर रहा है, जूम करके चेक करते हैं क्या हो रहा है कैंडल में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो यही होती है कि एक्चुअली मार्केट कैसे फ्लक्चुएट कर ला। बहुत टाइमी फोकस हो जाओ किसी चीज़ को लेके। ये देखो, अब ये इसको ब्रेक कर दिया 70 को, तो ब्रेक कर दिया। फुल कोशिश कर रहा, लड़ाई छिड़ी हुई है दबा के, और ये लड़ाई कभी भी मिड और ये गया ये गया ये गया सेट से। एक सेकंड नहीं लगने दिया इसने। या तो ये स्टॉप लॉस काटने गया, इस रोड को क्रॉस अगर करता है तो फिर प्रॉफिट निकलेगा, फिर मार्केट अपसाइड की ओर चल जाएगा। आपसे ज़्यादा ब्रेक कर रहा है इसको भी। अभी जो उतरे हैं उनको भी कट कर रहा है। ओके, देखो क्या होता है।
ये कैंडल डिसाइड करेगी रेड बनती है कि ग्रीन, ये काफ़ी कुछ डिसाइड कर देगी तुम्हारा। ये लो प्रॉफिट खा गया, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा लास्ट तक। थोड़ा हम बीट एंड वॉच करेंगे। डाउनफॉल है, निकलना चाहिए यहाँ से। एक बार क्लियर डुप लगाने जा रहा है नीचे। 27 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे इसको अपन कोशिश करके। इसके यहाँ तक आया, पलटता फिर से क्रॉसिंग किया, वीडियो कौन सी बना रही है आज के दिन की। सेकेंड वेव तक आ सकती है टेस्ट करना। थोड़ी और एक्सटेंड हो गया, 25,910 तक जा सकता। 90 का क्राइटेरिया तोड़ेगी टाइम फ्रेम यहाँ पर लंबा नहीं साइड, अभी ये इसके बाहर आएगी, इस पर आ सकती है शायद में भी पॉसिबल है। So let's wait and watch and analyze 54
40। आज का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बनता है 25,000। 9 पॉइंट। ये थर्ड वेव पे गया। ये थर्ड वेव कितनी भी हो सकती है। फिर से जो पॉसिबल सिनेरियो है वो यही बनता है। डिसीजन ना नीचे का है ना ऊपर का है अभी तक। क्लियर है डिसीजन। Sometimes they extended the positions. Cross sections are happening here. So this candle goes long, short position. This is happening here. This is screenshots, the NIFTY 50 index on trading terminal, the technical analysis to stabilize. Here to break down chart weakness for long buy or short. Based on the visual cues, Elliott wave theory, the chart seems to be annotated with Elliott wave counts, indicating the current wave is 4 and the next potential wave is 5. This suggests the market may be a corrective phase. अच्छा corrective phase में है wave 4 में before a final impulsive move. अच्छा impulsive move जो है वो last में आएगी. Price levels and support resistance. The price is currently, this is the horizontal red line. The highlight yellow zone between 24,900 से 25,000 acts as a strong support area. The blue zone above 25,100 could act as a resistance. 25,100 resistance है. Good. Trend lines. The blue upward sloping trend line suggests a bullish trend. The price is currently above this trend line, indicating a potential continuation of the uptrend. अच्छा uptrend में बनी हुई है. Okay. So yes, starting upper side. So go with that flow. 25,100 25,050 की अगर लो तुम
तो बेस्ट है तुम्हारे लिए लॉन्ग लॉन्ग में दिस टाइम एजुकेशन पर्पज के हिसाब से। तो मान लो तुमने 57 पे लिया, चेकआउट, फिर से अनदर ट्रेड लिया 57 पे, कितना लॉस हुआ, 2 3 4 पोजीशन कट करवा रहा है सबकी। इसका मतलब कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कुछ, है ना। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन करते हैं अपन 2-3 मिनट्स का ऊपर के लिए, देखिए इससे तो मार्केट जब नीचे है तो ये देख यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन मिला 2 मिनट्स का या 1 मिनट का ऊपर की साइड पे, तो फिर ये उसके आगे एक्सटेंड किया। अब इस साइड पे ये नहीं किया इसने, यहाँ पे 1 मिनट ऊपर के लिए ये नीचे की साइड बनाया तो कुछ टाइम की प्राइस नीचे जाएगी। अब ये जो टाइमिंग यहाँ पे था तुम्हारा कितना मिनट बढ़ गया, 3 3 6 और 7 मिनट, तो 7 मिनट यहाँ पे इसको सरकाना पड़ेगा तुम्हें। आगे 7 मिनट देख लो, यहाँ पे कितना 15 16 17 18 19 20 21 22 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर अब इसका लेट हो गया है टाइम, अब 5 चला जाएगा इस पॉइंट पे, फिर तुम्हारा 10:45 का पॉइंट आता है। ये इस लेवल तक जा सकते हैं प्राइजेस, कौन से 24,929 जहाँ से क्रॉसिंग मारा था, क्योंकि ये जो है इसका बेस है जहाँ से प्राइजेस कई बार उठी है इस पॉइंट से, और कई बार गिरी है, कई बार टच किया है। देखो जब भी यहाँ से गिरी है वापस उठी है कुछ टाइम बाद और ऊपर गई है, अपसाइड का रिट्रेसमेंट किया, वहाँ ऊपर गई है तो एक लेवल के बाद फिर से नीचे आई है। वेव्स में देखना पड़ेगा, ये देख टूटा, अच्छा खासा टूटा होगा, अपना सौदा कट हो गया होगा, हो गया कट माइनस में, देख 1 रुपया और कट होता नहीं तो अपना स्टॉप लॉस काम करता है गुड, कोई इमोशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, दिया दे दिया। अभी प्राइजेस कितनी नीचे आ सकती है, पॉइंट वही था, 4th पॉइंट ही नीचे बना रहा है। इस पॉइंट तक तो नहीं, लेकिन अगर ये इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक करता है, चलो अभी तक इस पॉइंट तक ही रखते हैं जो आज का लो है उस तक ही, तो फिर तुम्हारी 4th वेव, यही वेव थ्योरी समझनी है। वेव थ्योरी अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ ये मेरा देख लिया ग्रीन वाला जो था ये एकदम सही पॉइंट था, ये मैंने वो जैन वाला था उससे किया था ये टाइम फ्रेम को नोटिंग, और एग्जैक्टली देख ली 3:44 और 3:45 पे ये डाउनफॉल इसका स्टार्ट हुआ इस कैंडल पे भी, और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन भी था और काफ़ी कुछ था इस पे, इस कैंडल पे।
अभी देख बड़ा मूवमेंट कोई आने का नहीं लग रहा है जब तक ये वाली क्रॉस नहीं कर जाता, या इससे हल्का सा पहले कर जाए थोड़ा बहुत, तो ये अगला इवेंट जो है 10, 14, 15 के आसपास होने का चांसेस बनता है। तब तक प्राइजेस देखो कहाँ जाते हैं, तब तक एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता। एक मिनट और भाई। ये पॉइंट टूटा, ये पॉइंट ब्रेक करना पड़ेगा इसको, और ये पॉइंट जैसे ब्रेक करता है ये नीचे के लिए जाएगा। फिर बड़ा गैप है यहाँ से यहाँ तक का, कितना गैप है तुम्हारा, 917 से 924,867 तक का, 40-50 पॉइंट का गैप है। ये पॉइंट ब्रेक करना पड़ेगा इसको, और ये पॉइंट ब्रेक तो इसने किया है। लेकिन अभी वेट करो, कितने पॉइंट की बनी, ज़्यादा कुछ बड़ी बनी नहीं है, 14 से लेके 22 तक, 8 पॉइंट की कैंडल है। मुझे लगता है मार्केट अभी रेंज करेगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे डिसाइड होगा, दिखाया इसने ऊपर के लिए है, ये जो कैंडल है ये कैंडल दिखा ऊपर के लिए रही है, और जाती किधर ये देखने वाली बात है। सर्कल चेंज होता रहता है भाई, जब अपन करते रहते हैं ना ये ऊपर नीचे, तो एक चीज नहीं बदल रही है, वो है टाइम वाले ये जो सेक्शन है वो नहीं बदल रहे कहीं पे भी, प्राइजेज वहीं के वहीं है। अब जितना तुम बड़े टाइम फ्रेम पे देखो उसके हिसाब से देखो कितना तुमको करना है इसको। ये सर्कल की खासियत है थोड़ी सी, और ये गिरा। अब देखो, अब कैंडल देख के कोई चले तो वो फंस जाए यहाँ से,
हाल फिलहाल के लिए तो फंसा हुआ ही महसूस करेगा। यहाँ पे देख इस बार फिर से अपन समझ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से ऊपर ना जाए, इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे 1 मिनट से ऊपर अगर कैंडल बनी तो फिर ऊपर गया। यहाँ से ये नीचे बना रहा है, ऊपर नहीं गई, फिर से इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर नहीं रुकी है, सस्टेन नहीं की और नीचे नीचे तोड़ता जा रहा है, तो फिर नीचे के लिए डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और अब ये यहाँ तक जाने की संभावना रखता है 24,867 तक। बड़ा वॉल्यूम टूटेगा तो टूटा टूटा टूटा। तो गो शॉर्ट का हाल शॉर्ट बनता भाई। अगर तुम इसमें उतरते हो तो तुम्हारे को बनाना पड़ेगा शॉर्ट पोजीशन। इस कैंडल का हाई शॉर्ट होगा अपना यहाँ तक, अपना ये रहेगा ऐसा। 74 रुपीज़ के एंट्री मार लिया अपन, जैसे कि 24,900 की पुट पेपर पे लिख कर रख ले भाई। ऑब्जर्वेशन चलने दे, जितनी ऑब्जर्वेशन हाई रहेगी उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से तो चीज़ें पकड़ पाएगा कि कैसे मूवमेंट चलती है। जितनी ज़्यादा मूवमेंट पकड़ना सीखेगा, बाकी तुम्हारी सोच अपने आप तुमको फॉल्स सिग्नल भी देती है, और ये हर किसी के साथ होता है। अब ये नीचे के लिए लिंक तो बनाया है इसने, देखो अब जाएगा ये ऊपर की साइड या फिर नीचे के लिए, दबाव तो नीचे की तरफ दिखा रहा है ये कैंडल। 75 पे अपनी ये ट्रेड थी। सेवेंटी सेवन 77 इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है या तो बट मैं इस ट्रेड में बना रहूँगा जब तक कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। और इसी से मेरी मेंटल एबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। wait for right
24,900 का लेवल ये तोड़ता है, ब्रेक करता है तो फिर नीचे जाएगा एक बार के लिए। नहीं तो यहाँ पे रेंज रेंज खेलेगा। 10:10 जो घड़ियों में दिखता है हर किसी की घड़ी 10:10 ही बताती है, और आपका अभी का जो समय है वो 10:10। चाय पी लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो भाई लोग दिल थाम के बैठिए, गाड़ी किधर जाती है मुंबई दिल्ली। अगर 10-15 पे मूवमेंट नहीं आएगा तो फिर रेंज टाइप हो जाएगा मार्केट, रेंज में फंस जाएगा। अभी कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है। तो नहीं, ये जब तक शॉकवेव वाले सीन अभी तक हुए नहीं है, शॉकवेव वाले सीन हो चुके हैं। सेवन 77 मुझे आज ये इडियट वेव पूरी समझ में आया, बस इतना ही चाहिए। इसकी प्रैक्टिस प्रो जो होता है ना ट्रेडर, साइलेंट ट्रेडर होता है, बड़े ट्रेडर होते हैं, 77 गया देख, वहाँ पड़े पड़े भी 77 गया, 78.60, 78.90। 24,900 की कॉल दे, पुट देख, इतने में से ही पलट के आ गया 76, और हल्का सा शॉक डालते ही ये गया 77.20, 60। यहाँ पे नोट कर, यहाँ से BNS दिख रहा है, बाइंग एंड सेलिंग 78, 78.60, 78.90। So your target achieved. If 3 rupees going to 4 rupees, 79.55, 79. Wait and watch. Go deeper. 80 rupees, 5 7, 7 multiply 5. It's your huge profit. If you trade with 80 rupees, it's 80 rupees clear. Our target is clear. So 5 multiply 75. Check out 350 on 375 on one lot. If you 10 lot multiply, it's just 3,750. Only 5 rupees difference. If 100, just touch the prices. I will wait on 10-15. 10-15 candle decide where they go. I will wait
trade and don't exit in this trade. So I will wait. ₹5 dribbling money always, and add the money and out of the money. $79, $79, $79, and ये गया वापस, और तुम्हारा 10-15 का जो टर्निंग पॉइंट है वो बीतने वाला है, और वो नीचे ही रहा है तो नीचे ही जाएगा, ये भी क्लियर हो गया है। और तो जो तुम्हारा है ₹81 चला गया है ट्रेड, 24,900 की जो कॉल थी ₹81 तक जाके आ चुकी है। तो बढ़ने वाला जो तुम्हारा प्रॉफिट था वो ज़्यादा ही होता, और रुके होते तो देखो ये पैसेंस, ये धैर्य का कारण है। ₹81, 81.75, 95 and 82, nearby 82 trade, and just go beyond this level. 82, 82.40, ₹7. They will give you exactly ₹7 right now here in the trade. I'm just stop lossing here. It's a very minimum stop loss if you go to the right way. ₹7, how much? 7 multiply 75 multiply 10 lot, ₹5,250 on one trade. So here is the probability. दस 15 की कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है, 9:45 की कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी कैंडल इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। 9:20 की कैंडल, उसके बाद की जो कैंडल्स है वो नीचे बनी नहीं थी, तो ऊपर की साइड दिखाया इसने रुक, और ऊपर की साइड गई प्राइजेस। तो दोस्तों वेट करने वाले को मिलता है, जो नहीं कर पाता उसको नहीं मिलता है। अब प्राइजेस ऊपर जाने के लिए आप उस एंट्री से आउट हो सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा टारगेट तो अभी तक आउट नहीं किया है, ये लो, इसको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ले जा सकता था। 75 पे 10 लॉट का तुम्हारा कितना लगता है? 140, 750, 55,000 में 5,000 का फायदा। ये देखो कितने मिनट में 55,000, जैसे अभी की जो प्राइस चल रही है 55,072, और ₹54,884 निकल गए। ठीक रहा, निकाल दिया वहां से, हो गया 10, 15, 16, और ये लो ऊपर साइड गया। अब तुम इसमें एंट्री लेते तो 3-4 हज़ार माइनस हो जाते इतनी सी देर में, और इधर प्लस होते। तुम कौन सी साइड पे? इस साइड पे। कट कर गया, गुड। अब ये वेव आई है ऊपर, तो इस वेव को यहाँ तक
खींच के चल लो। ये 10-16 पे काम करी है, 10-15 की जगह 10-15 पे इसने मैनिपुलेट किया है तुम्हारे दिमाग को या ट्रेडर के दिमाग को। कुछ भी फिक्स नहीं है, ये कैसे मैनिपुलेट करता है उसको देखना होता है तुम्हें सबसे ज़्यादा। उधर प्राइजेस 68 रुपीज पे जा चुकी है और इधर बढ़ती जा रही है प्राइजेस। सो 750 24,867 64,000 64,228। अब हल्का डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है, हल्का, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का आएगा। ये 5th वेव है भाई, ये तो 4th वेव थी इम्पल्सिव मूवमेंट। ये देखो, ये जो थी ये 4th वेव थी। उसके बाद बताया कि इम्पल्सिव वेव आएगी। ये देख, यहाँ पे इसने बताया है 5th वेव। 5th वेव जो आएगी इम्पल्सिव वेव आएगी। 4 जो होती है वो करेक्टिव हो जाती है। सजेस्ट द मार्केट माइट बी इन अ करेक्टिव फेज। वेव 4 एक करेक्टिव वेव है, जबकि फाइनल जो है वो इम्पल्सिव वेव आएगी। व्हाट इज द इम्पल्सिव वेव? इम्पल्सिव वेव को समझते हैं। तो यानी impulsive wave in a elite wave theory in the final wave of five-wave impulsive sequence often characterized by strong momentum and a clear trend direction और clear trend direction देता है। Not कि trend line makes you a great trend line, not it's a half truth। वो पूरा सच नहीं है कि ट्रेंड लाइंस काम करती। ट्रेंड लाइंस कई तरीके से काम करती है। आपको जो जितना ज़्यादा नज़दीक ले जा सके ट्रेड के वो ज़्यादा काम किया और बाकी उतने ही नाकाम। हाउ यू कैन अप्रोच ट्रेडिंग दिस पोटेंशियल मूव बेस्ड ऑन द चार्ट? कि कैसे पोटेंशियल इसमें आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव 5। वेव 5 इज टिपिकल ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, ऑफन अकम्पनीड बाय हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और एंथुसियाज्म के साथ। एक्सटेंशन, इट कैन समटाइम्स एक्सटेंड बियॉन्ड टिपिकल प्राइस टारगेट्स। और ये एक्सटेंड भी करती है, मतलब आगे तक भी जाती है। एक्सटेंड मतलब कि ऊपर भी बढ़ती है। एक्सटेंड किया, जैसे इसने इसको तोड़ के इसको एक्सटेंड किया, तो ये ही पॉइंट बन रहा था, लेकिन इस पॉइंट से इसने ऊपर गया तो ये एक्सटेंड कर लाएगा। अब देखो अपर साइड जा रही है। 62 रुपये में मान लो खरीद लेते, तो अभी कितना होता है? 66,400 रुपीज सीधा फायदा। तो ये भी एक पढ़ाई है। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, जितना पैशंस तुम्हारे में डेवलप होगा। सिर्फ बाहर की वीडियोस देख के, थ्योरी देख के समझ कभी नहीं आए। तुम्हें थ्योरी के साथ प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी क्या है मार्केट की। मार्केट की थ्योरी अगर समझ में नहीं आती है तो फिर दूसरी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये कन्फर्म है। देख लो किस हिसाब से जा रही है चीज़ें। मैं इसको हटा लेता हूँ अब कम से कम। फिर तो देखो ब्रेक भी नहीं कर रही है उस पॉइंट को। जब ब्रेक पॉइंट हो जाएगा तब वो फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी उसकी। ये भी ध्यान रखना, वो कहीं पे भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ समय के लिए प्राइजेस अभी भी बरकरार है वहीं पे और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अभी तक मोमेंटम जो है स्ट्रांग बना हुआ है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। ऑर्डर फ्लो जो है वो भी देखा जा रहा है और एक्सटेंड करती हुई प्राइसेस अभी भी। ये लो 1000 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट कम से कम तुम्हारा 1000, ये लो 67,000।
प्रीमियम बढ़ गया। आप बताओ, आप कॉल में तो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है उसका भी फायदा मिल रहा है, पड़े पड़े भी कई बार। अब ये उस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट नहीं कर पा रही है। ये इस पॉइंट को 930 को तोड़ नहीं पा रही है। देखो बराबर बनाया हुआ है, जैसे कि वहीं पे जाके टच कर रही है, वापस रिटर्न मार रही है, टच कर रही है, रिटर्न मार रही है, एग्जैक्ट पॉइंट के आसपास। देखो यहाँ पे भी यही था। इसको जैसे ऊपर जाके नहीं रुक पाई तो नीचे की साइड लेके आई। कितने पॉइंट दिए तुम्हारे को? 930 से तुम्हारा लेके आई है 94 तक, 35 पॉइंट, 35 पॉइंट्स दिए। यहाँ से यहाँ तक जाने का फर्स्ट टारगेट होता। अगर किसी ने उल्टा खेला होगा, इसको शॉर्ट किया, लॉन्ग किया होगा, वापस से अपन ने शॉर्ट किया था उस टाइम, तो इसको लॉन्ग किया होता तो इस कैंडल का मान लो ले लेते लो, इस कैंडल का लो लेते हैं, ठीक है, और ऊपर के लिए ये टारगेट होता तो 5-6 हजार रुपये प्लस। देखा, वहां से प्राइसेस गिर रही है, कुछ टाइम के लिए ले सकते हो तुम, गिरेगी वहां से प्राइसेस। अब यहाँ से तुम्हें करना है शॉर्ट, तो ये करो शॉर्ट, इसको इस कैंडल का हाई ले लो और इस लाइन तक ही टारगेट लो पहला, जो तुम्हारा लो इस प्राइस लाइन को एक्सटेंड करेगा थोड़ा सा, तो उसका भी फायदा तुम उठाना चाहो तो उठा सकते हो। बाकी इतना ही लो तुम, ये लो। पाँच हजार 694, 5413, ये लो, तुम्हारा टारगेट अचीव होने वाला है। करेंगे, टच किया और ये लो, और ये लो टच कर गई पूरा, और ये लो अपना टारगेट अपने को मिल गया। ऐसे देखो तो छोटा सा स्केल था, वो भी करेक्ट था। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी तुम्हें मार्केट में, तुम्हें एक जगह नहीं बैठना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा मूवमेंट मिल जाएंगे तुम्हें। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिटर्न मार रहा है, अभी नहीं कर सकते रिटर्न मार रहा भी रहा है कि नहीं मार रहा है, लेकिन ये टारगेट था, ये टारगेट अचीव हुआ। जिसका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। ये हो गया बस। अगर बनता है तो फिर यहाँ तक बनता है, ये वाली लाइन जो है इसका बेस पॉइंट बनेगी 24,909।
जय बाबा रामदेव जी की जय। आज है रामदेव जी के बीच। तो हाँ, राजस्थान में लगते हैं मेले। राम सा पीर के, पीरों के पीर का है को रामदेव बाबा को। बोला था रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया। हो गया भाई रिटर्न। जो भी नहीं ले पाया वो अब डाउन साइड मत बैठना, कम से कम क्लियर कट है, डाउन साइड नहीं बैठने का। अभी अप साइड मूवमेंट है। तो ये छोटे छोटे इम्पल्सिव मूव्स आते रहेंगे। कोई भी इसके बाहर कुछ मूवमेंट होने का चांसेस बनेगा, जो भी तुम्हारा बनेगा। और ये टाइमिंग कटआउट बता रहा है भाई 10:34-35 के आसपास। और ये लो बोला था बाई साइड, ये लो बाई साइड कर गया कबाड़। जो नहीं समझा, अपना टारगेट पहले ही अचीव हो गया था। उसके बाद ये लो इम्पल्सिव मूव मिला, इम्पल्सिव मूव। फिफ्थ वेव है भैया, ये फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव बड़ा फाड़ती है। फिफ्थ वेव अगर कंप्लीट नहीं हुई है कहीं तो कंप्लीट होने दो, होने दो। उसके बाद हल्की मूवमेंट चलती रहेगी। और उस हल्की मूवमेंट में तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे खेलना है कि कैसा मार्केट तुम्हारे लिए सही है। ज्यादा तेजी वाला, ज्यादा धीरे चलने वाला, या मीडियम लेवल का। उसके अंदर मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है कोई भी इंसान, जो उसको मूवमेंट पता हो कि हाँ इस रेंज के बीच अगर कोई चीज़ चलेगी तो फिर वो बड़े लाख रुपए, 10 लाख के ट्रेड खेल सकता है पेपर पे। लेकिन वो तभी खेल सकता है। मैं आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग, आई एम ओनली जस्ट ऑन एजुकेशन पर्पस। कितना खतरनाक मुंह था भाई। ये था देखो 16 से तुम्हारा 37, 20 पॉइंट का, सीधा 20-25 पॉइंट का, 20-30 पॉइंट का था। और सीधा क्रॉसिंग मार गया उसको। अब ये जो तो हमारा क्रॉसिंग है वो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है। इस पॉइंट पे ये पड़ रहा है 24,941। अगर ये इसको निकालता है तो यहाँ बसने के फिर से इसके आसार आ जाते हैं। ये बढ़ता है 24,949, टाइम फ्रेम 10:45 के आसपास। तो टाइम फ्रेम जिसको समझ में नहीं आएगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मार्केट के अंदर बहुत, मुझे लगता है कि डीप लेवल तक बैठना चाहिए विदाउट थिंकिंग। थिंकिंग के साथ मत बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो। जितना तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उतनी मछलियां तुम्हें पकड़ में आएगी। अपने आप को शांत करना सीखो, मेडिटेशन करो जितना हो सके। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हुआ भाई, देखो जहाँ प्राइजेस कट मारी है, देखो कट मारने के बाद अगली कैंडल इसने ग्रीन बनाई। उसके बाद भी तुम्हारे पास समय था, जो इसने बताया कि मैं रिवर्स करूंगा किसी चीज को, क्रॉस सेक्शन करूंगा। और इसने क्रॉस सेक्शन फट से उल्टा किया, क्योंकि मार्केट ने अपनी कंडीशंस यहीं बदल ली थी। ये जगह पे थी, वहां पे ये हल्की सी शॉर्ट कवरिंग इसको बोलते हैं, वो हुई थी। और इसकी वजह से ये इस पॉइंट पे है, एकदम एग्जैक्ट 50 पॉइंट पे। ठीक, 100 पे गया, नीचे आया, फिर से कहाँ गया, 96 पे गया, फिर से नीचे आएगा, 50 तक जा सकता है फिर, या उससे भी एक्सटेंड करता हुआ आगे जा सकता है। या फिर यहीं से इसका हाफ करके 65 के आसपास, 69 के आसपास से वापस ऊपर निकल सकता है।
तब तक ये ऐसे टकराएगा, यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट कभी भी बन सकता है। वेट एंड वॉच करो भाई, कितना बन गया भाई, ये गया होगा भाई 86। अपन ये लेते मान लो तो देख लो फिर कितना होता। 24,900 की, फिर ये अभी ये गया ना 90, तो इस मूव का कितना फायदा हुआ देखते हैं एक बार के लिए, इसका चार्ट देख लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट आया है वो कितने रुपए दिया तुम्हारे को, ये देखो ये मूवमेंट था यहाँ से, तो यहाँ से ये 74-75 रुपए से तुम्हारे को लेके गया है 92 रुपए तक, 92 तक गया ना, लेके जा भी रहा है क्योंकि यहाँ नीचे बेस बन चुका है, नीचे ट्रेड हो नहीं रहा। तो ये लो गया तुम्हारा ऊपर फिर से, और मुझे लगता है यहाँ पे आगे कहीं थकेगा ये 98 के आसपास, अगर थकेगा तो थकेला, अगर थकेगा तो 95 के आसपास से ऊपर जाने के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक वेव बना रहा है जो बैलेंस करेगी। तो बैलेंस के बाद किधर जाती है चीज़, कोई भी चीज़, जैसे कि अपन मान लो क्या बनाए, ये वेव बनाए, साइकिल बनाए, सब लाइन बनाते हैं, साइन लाइन बनाते हैं। चलो ये देखो, देखिए देखिए तुमको ये चीज, ये मान ले ये था, देख ठीक है, देख अपर साइड में हुआ है, और वापस बनाते हैं, ये शानदार लगा मुझे। काम कर सकता है ये, हम काम तो करती ही होगी है। ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ का, 95 से ऊपर गई, 94 तुमको बताया, 98 इसका हेवीएस्ट पॉइंट हो सकता है, और उसके बाद हमेशा प्राइस ऊपर निकल जाएगी। तो ये अपवर्ड मूवमेंट है, नीचे की साइड वाला भी अप साइड मूवमेंट है, नोट कर लो इस चीज को। प्राइसेस फॉल हो सकती है कभी फिर से। तो टर्मिनेशन जब भी होगा वेव 5 का, ऑफन एंड्स व्हेन द मार्केट शो साइन ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब जब उसका दम घुटने लगेगा, सच एज डाइवर्जेंसेस इन इंडिकेटर्स आरएसआई एंड एमएसडी का डाइवर्जन होगा और सडन स्पाइक्स इन वॉल्यूम होगा, फॉलोड बाय अ रिवर्सल, और फिर रिवर्सल मार देगा। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर वेव 5, एंट्री कंफर्मेशन, वेट फॉर द प्राइस to break above the recent resistance levels 25,100 to confirm the start of wave 5. This breakout should ideally be accompanied by an increase in volume. Increase हो जाएगा volume,
पुल बैक जो एंट्री है, इफ द प्राइस पुल्स बैक टू रीटेस्ट, रीटेस्ट करने के लिए अगर 24,950 और 25,000 के सपोर्ट जो उसके आफ्टर ब्रेकिंग आउट करे, तो इट कुड प्रोवाइड अ लोअर रिस्क एंट्री फॉर अ लॉन्ग ट्रेंड। रिस्क तुम्हारा कम हो जाता है फिर अगर वो रीटेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये रीटेस्ट करता है फिर से, और रीटेस्ट के पॉइंट पे ही है, ये 24,950 के पॉइंट पे ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आने की चांसेस है यहाँ पे इस व्यू में, अगर माना जाए तो यहाँ तक के लिए 86 रुपीज़ तक। तो शॉर्ट करो इसको तुम, अगर करना चाहो तो शॉर्ट करो भाई। या फिर ये कैंडल नीचे बनने दो इसके, जिसकी बॉडी इसके इस पिछली वाली कैंडल के नीचे हो। चेक करता है, देख दिमाग तो ये कह रहा, दिमाग जो बता रहा है उसको देखो पहले। मान लो मैंने 57 रुपये पे शॉर्ट किया, 24,900, 57 से ये लो 60, जस्ट सेकेंड्स, 3 रुपीज, 5 रुपीज लेके निकलना, निकल सकता है आराम से। वेट, that touch this saffron लाइन, ये जो केसरी लाइन है इसको टच करेगा, ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कर रही है, ये इसको फिर से टच करेगा, ये यहीं से कहीं घूमेगा, ये ऊपर की साइड निकल जाएगा, दोनों में से एक चीज होके रहेगी। सो वेट करो, मोमेंटम डाउन ट्रेंड का ही है, प्रीमियम तुम्हें मिलने वाला है वो डाउन ट्रेंड की ओर मिलेगा हाल फिलहाल के लिए, राइट नाउ दिस मोमेंट। सत्तावन का शॉर्ट किया, देखो कितना गया। नेक्स्ट जो इसकी वेव आती नजर आ रही है, वो मुझे नजर आ रही है इसके यहाँ पे 10:53 पे 54 मिनट 55 आ गया नीचे है, ये 65 रुपये है, 57 से 65 हो गए भाई, 5 रुपये तुम्हारे। 5 रुपीज में तुम कितना प्लस होता है देख लो, ये फिर से ट्रेड सही था आपका, शॉर्ट मारो हल्के हल्के 5-5 रुपये, 75 और 375। दबाव में बना हुआ है, 86 तक जानी चाहिए प्राइजेस।
breaking out. It could provide a lower risk entry point for a long trade. Target, primary target. The first target for wave 5 would be the Fibonacci 1.618 Fibonacci extension of wave 4, which is not visible on the chart but can be calculated for now. The immediate resistance is around 25,250 के आसपास immediate resistance फिर से आ जाएगा. सेकेंडरी टारगेट जो है, if the momentum continues, अगर momentum continue तो next target would be 25,500 और higher depending on the strength of the move. Stop loss place a stop loss below the 24,900 support level. If the price falls below this level, it could be indicated that the impulsive move is losing steam and wave 5 not materialized as expected. Key considerations: volume. Watch for increasing volume during the breakout, and it confirms the strength of wave 5. Indicators RSI. If the RSI moves into overbought territory above 70 but continues to rise, it could indicate strong momentum. MACD, a rising MACD histogram during the breakout would further confirm the bullish bias. Price action: look for bullish candlestick pattern, bullish engulfing hammer near the entry point to add confidence to the trade. Risk of failure: if the price fails to break above 25,000, so instead reverse, it could indicate that wave 5 is not forming as expected. In this case, the market might enter a corrective phase. और फिर corrective phase में आएगा wave A of a larger correction. If the RSI shows bearish divergence, price makes a higher high while RSI makes a lower high. It could signal weakening momentum and a potential reversal. Exit strategy: partial profit taking. Consider taking partial profits at the first target को 25,250 and letting the rest of the position run with a trailing stop loss. 25,250 पे बाहर आ सकते हो. उसके बाद अगर तुम्हारे bullish entry पे तो जाना तो trailing stop loss. Use a trailing stop to lock in profits as the price moves in your favor. For example, trail the stop below the most recent showing low. Alternative जो scenario बन सकता है, if the price fails to break above 25,100 तो instead breaks below 25,900, it could signal the start of a corrective phase. कि वो फिर 25,100 से 900 के बीच जो है वो corrective phase चल रहा है. इसका मतलब है wave A. In this case, you might want to exit the long position. Then तुम exit जाओ and consider the short selling opportunities पे बैठो. Summary: bias bullish for wave 5, targeting 25,250 and potentially higher. Entry on breakout above 25,100, 25,000. Look for volume expansion and bullish indicator signal RSI and MACD. Would you like help calculating the Fibonacci extension levels for 5, or do you need for further clarification on any pattern? Calculating 5 लेवल बता भाई. चल कोई बात नहीं, तू लेवल बता दे तो बता सकता है, हेल्प कर सकता है तो कर. यहाँ पे तो यही चल रहा है अभी तक, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता. यहाँ पे भी देख लो, ऊपर नहीं रुका है, यहाँ नीचे गया तो फिर नीचे ही गया. सस्टेन करना चाहिए. सस्टेन जैसे कि प्राइस ओपनिंग होती है, जब सुबह ओपन होता है प्राइस, उसको ध्यान करो वो कहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट. उसके बाद एक वेव बनाओ अप एंड डाउन की, किधर जा रही है, तो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आएगा उसी चीज़ को लेकर. Fibonacci का जो एक्सटेंशन है होने वाला फर्स्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग द इम्पल्सिव वेव. टू कैलकुलेट द Fibonacci extension levels for wave 5, we need to identify 3 key points in the yield wave structure. Wave first starting point, beginning in the impulsive wave. Move wave first ending point, top of wave first. Wave force ending point, recent correction low before wave 5 begins. From the chart you shared, here's how we can approximate these points. Wave first starting point, let's assume this is around 24,200. The beginning of the impulsive move. Wave first ending point, let's assume this is around 24,950. Top of wave first. Wave force ending point, this is the recent low around 24,700. We all use these points to calculate the Fibonacci extension levels for 5. For wave 5, let me compute these levels for you. Here are the calculated Fibonacci extension levels for wave 5 based on the assumed
की पॉइंट्स 61, 25,163 टू 61%, 100% एक्सटेंशन अगर होता है तो फिर जो 25,450। ओके, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ फेबियनिक एक्सटेंशन लेवल्स जो बनाने हैं, not this is the first potential target for wave 5. If the price reaches this level, it could act as a minor resistance. 100% extension, this is a common target for wave 5. If the momentum is strong, the price may reach or exceed this level. This is okay. क्रॉस कर रहा है भाई, क्रॉस सेक्शन पे आ चुका है, सो अलर्ट, बी अलर्ट। एक कैंडल इसके ऊपर बनने दो, फिर तुम ऊपर के लिए बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कैंडल ऊपर बने तभी काम बनता है, उससे पहले कोई काम नहीं बनता। तो जो फॉल्स सिग्नल है उनसे बच सकते हैं अपन, जो फंसाने के सिग्नल्स होते हैं वो भी ऐसे ही, यही तो फिल्टर आउट करना है। अब इसमें नॉइज बहुत है राइट नाउ डेटा में, तो उस डेटा की नॉइज को कम करो सबसे पहले। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स अपन यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे ऑर्डर फ्लो ले लो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वोर्टेक्स इंडिकेटर। तो चलो वोर्टेक्स इंडिकेटर दिया भाई, तो बताते हैं। क्रॉस सेक्शन तो यहाँ हो चुका है भाई, रेड वाली ऊपर थी तब नीचे गिरा था, अब नीचे गिरेगा तो सो गॉड शट, क्रॉस हो चुका है ब्रो। क्रॉस कितना इससे ऊपर निकलना चाहिए, 1534 के ऊपर निकलना चाहिए, तब क्रॉस सेक्शन में बैठना है तुम्हारे को, उससे पहले नहीं बैठना है। इसको क्रॉस करे, इसको 1.094, इसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक नहीं बैठना है। ये नोट करना है कि कितनी देर बाद वापस पलट जाता है। यहाँ पर पलटी मार रही है 1.0817, करीब वहीं था, करीब वहीं से फॉल्स पॉइंट था। टीशर्ट पर निकलने के लिए पकड़ो, फिर तुम्हारे को ऊपर के लिए जगह मिलेगी। यहाँ से भी टीशर्ट पर निकलना है तो निकल गया, कि पॉइंट पकड़ो, यहाँ से निकला 1.80 पर, तो फिर गया 1.0660 से ऊपर निकलना चाहिए। तो ये 84 से ऊपर, ये देखो क्रॉस कर गया और रिवर्ट मारा है, देखो यहाँ से क्रॉस सेक्शन, इसको इस पॉइंट को कहाँ नीचे के लिए, ये समझना है तुमको। यहाँ ये फेक करते हैं, तुमको फेक सिस्टम बनाते हैं, और बाकी साइन वेव भी काम करती है भाई, तुम्हारी अच्छी खासी काम करती है, देख लो तुम। अब साइड ही चलना है, 0.33%, नोट करो, ये गोल्डन रेशियो है जैन का। जहां आज मार्केट के बंद होने की उम्मीद मुझे जहां तक लगती है वो यही लगती है, 0.33% इसके आसपास।
तो मार्केट में मुझे लगता है जो भी फ्लक्चुएशन आने हैं वो देखते हैं 11 बजे क्या होता है, और मेरी जो टाइम फ्रेम है वो भी देख लेते हैं वहाँ पे। ये देखो इसको क्रॉस किया है तो मतलब अप साइड ट्रेंड है, थोड़ा सा एक्सटेंशन कर सकता है या फिर ना करे, चेक करो। Balance of power. Power is the powerful word itself. Evidence corrections and practical applications in trading. Marking lead way of presenting the Nilly method. Green Nilly. Who is the green Nilly? So I will find out. Green Nilly. He is the green Nilly. $19.95. So I will save this new wave really. So first of all, where we start? So we start here. Past performance are not. If nothing else that you learn today, this is probably the most important thing I can teach you. This is something most beginners don't realize, and it takes years to understand this concept. But when you're dealing with futures data, there's a clear process of decay that occurs over time. Right here in this real-time chart of the gold market, I superimpose the gold daily cash data and the futures data so that I force the two major highs and lows in March and April to coincide with one another, so that you can clearly see over time how the futures price decayed. So let's say that you were trading this particular market. You decided to buy physical gold in mid-March. You held it for 3 months. It's worth the same amount 3 months later as when you bought it. But your futures contract, if you bought it at the same time, would be worth almost $10 less. You would have lost $10. Nothing happened to the actual price of gold on a cash basis. Now, why is this important? Not only does it tell you shouldn't hold long positions for long periods of time in the futures market, but it tells you that the process of analysis cannot be trusted when you use futures charts.
So anytime that you're preparing long-term market analysis, if it's a few days, that's fine. But the more evident the decay becomes over time. So if you're वेट करो, आई एम कमिंग। तब तक आप मार्केट को देखो, इस पावर नीचे की तरफ जा रहा है भाई। तो थोड़ी देर के लिए बैलेंस कुछ भी चूक सकता है, बिगड़ सकता है। सो लेट्स वेट, आई एम कमिंग जस्ट 2 minutes after, 2 to 5 minutes. Just I'm going to washroom. So please continue our life.
बराबर एग्जैक्ट टाइम पे चढ़ रही है 11:45 पे मोमेंटम चालू हुआ जैसे क्रॉस किया 11:45 वाले ने वो डिवाइड पे मार डाला इसने उसके बाद कंप्लीट हो चुकी है अब डाउन साइड स्टार्ट है भाई अगर एक कैंडल और डाउन बन गई डाउन साइड जाओ आप तो कंफर्म डाउन साइड अब डाउन साइड तुम्हारा मूव बन रहा है भाई डाउन साइड स्टार्ट हो चुका मैं भी लेता हूँ थोड़ा ट्रेड ले जाने का बनता है भाई हल्का सा आएगा कंसोलिडेशन मुझे लगता है अगर ये इन तीनों को ब्रेक करता है चारों को तो फिर डाउन साइड मोमेंटम बन जाएगा फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है भाई तुम्हारी यहाँ पे बदलाव आना निश्चित है अब ये इस रोड को क्रॉस करेगा एक बार डाउनवर्ड मूवमेंट आना चाहिए 24,000 टेस्ट करने के लिए 24,930 तक पॉसिबिलिटी बना रही है
कैंडल थी वो वापस वर्टिकल लाइन थी 45 का। फुल फाइट चल रही है, फुल ऑफ फाइटिंग, दबा के फाइट चल रही है। बराबर ये लेवल्स काम कर रहे हैं जहाँ से जो आज टाइम फ्रेम में टाइम साइकिल काम करती है सबसे बढ़िया। फ्रेम बाय फ्रेम चलो, जैसे एक मूवी चलती है। यहाँ से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है फिर से। ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस था यहाँ तक बराबर। पावर बैलेंस कितना काम करता है देखते हैं, वेट एंड वॉच। सस्टेनेबल हो रही है प्राइजेस। ये 49 के लेवल को तोड़े तब जाके बात हो 47 के आसपास, और बहुत तेजी से अगर तोड़ता है तो वो मैटर करता है। धीरे तोड़ता है या तेजी से तोड़ता है वो भी मैटर करता है इसमें। कोई भी 12-15 के आसपास नेक्स्ट मूवमेंट होगा तो होगा उसके आसपास पड़ोस में। ग्यारह बजे के बाद का मार्केट जो है वो एकदम ठंडा मार्केट है, एक फिक्स रेंज में चल रहा है। ये निकलेंगे 2 बजे के आसपास बाहर, तब तक मार्केट की हालत क्या रहती है देखते हैं।
850 तक जाता है तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है इसी ट्रेड के अंदर। एक बार के लिए दवा में तो जाएगा मार्केट, तब तक के लिए वेट करो। बाई साइड क्यों नहीं जा सकता? कब डंप करे। इम्पॉसिबल के करीब है वो। अब जिधर प्राइस ऐसा है जाने दो, अपन ने पुट लेग का पुट एक्सटेंड करेंगे लॉन्ग टर्म। Trying to do any kind of long-term market analysis, you have to use cash data. That's probably the most important thing I can teach you today. If you don't use cash data, you're not going to get repetition of market behavior. You're going to get continuous distortion, unreliable information, and your whole attempt to make profitable trading success is going to be pretty much thwarted, in my opinion, because of this decay process. Cash data also has a tremendous advantage that you don't have to worry about continuous contracts, connecting contracts, because what happens when this futures contract expires, you then have to jump to the next contract month, and all of a sudden you have a dramatic jump in price, which is another element of distortion that you don't want to have to deal with when you're trying to make your technical analysis approach more scientific and objective. Obviously, if you can't make an approach scientific or objective, then you're probably never going to be able to continuously trade successful unless you're a really good emotional reader of the markets. One other element, which is something most people won't go to the trouble to do, unfortunately, because it's not readily available. It's not something that's easy. But you'll notice here how the upper chart is drawn in a continuous line fashion. This is what I call wave charts or neo-wave charts, and I'll show you how to do these later. The bottom chart is a bar chart. A bar chart creates an unrealistic representation of reality. When you have a bar chart, that bar is telling you that the high and low of that time frame occurred simultaneously. Obviously, that's not possible. So if you're going to do any long-term or any accurate analysis, it doesn't matter if it's long-term or not, you really need to divide and separate the event when the high of the day occurred first or the low of the day occurred first, and separate these in time so it creates an angle of motion, either this direction or this direction. Whichever came first, you want to make sure to plot that first. Whatever came second comes second. If you don't make this separation,
then you never know exactly how that day unfolded. You don't know what information you may have missed. It can dramatically impact short-term analysis if the market's high and low occurred this way or it occurred this way. But you won't know that on a bar chart because it looks just like that. So that's another important step you need to take in further making your approach more scientific. Another serious problem that occurs from following futures charts is the complete unreliability of support or resistance. If you follow this cash data, which is the dark black line, let's say you put a support line across here and you'd purchase that physical gold. Obviously the support line held all the way across. If you did the same thing in the futures chart, it held possibly here, but then it broke it several times thereafter. So that support that you thought was real really wasn't real. To compensate for this, the only way you could possibly compensate is to have trend lines that are drawn at a downward angle at the rate of deterioration of the value of that commodity. There's a premium that's added to futures contracts, if you don't know this, and that premium decays with time. The physical underlying gold or value is there, with the premium declining over time. So you'd have to have your trend lines all declining on a futures chart at that rate of decay. So why go to all the trouble and deal with all the hassles? The best thing to do is just start with cash data. Then when the opportunity comes about, let's say your analysis indicates something important is about to happen, when it is about to happen, then you start looking at the futures data and you start superimposing it or adjusting it to figure out where you would enter based on that cash information. Okay, this is another important concept that you should adopt, I think, no matter what kind of technique that you use. When you're looking at charts, and let's say you've decided to make wave charts a regular part of your analytical process. If you're looking at a chart that looks like this and has hundreds possibly of monowaves on it, that's way too much subdivision to arrive at a reliable conclusion. Wave theory depends on limits imposed on everything, so that you want to have limits on how much information you analyze at any one time, along with lots of other things. But the ideal time frame, if you can just visually get used to this, and maybe you can refer to it over time, the ideal time frame is indicated by diagram A and diagram E. Those are pretty much the range of complexity that you should see on a chart. If it's anything like this or like this, that's presenting you with too much information. It makes it very difficult to come to accurate conclusions. And this small amount of information, and this especially, is not enough to arrive at any kind of conclusion. So your complexity of your chart has to fall into a particular range to arrive at accurate conclusions. So what does this mean? Let's say that you're following a chart on a daily basis. It starts looking like this. Well, what you want to do is create a weekly chart of the same time frame so it starts to look like that. And you pay less attention to this daily chart and more attention to the weekly regarding that time frame. And when you're studying the daily, you should start to focus in on a much shorter time frame that you can once again analyze. Does that make sense? Okay, let's go to the next chart. Innovation number 3 is what I call self-definition. This is the market defining where you start and stop your patterns, the market defining what constitutes a degree. Most people, if they were to look at this chart, would immediately probably start doing the analysis from this lowest point here. Maybe from the beginning if they're doing just pure mathematical analysis. But if they're doing any kind of overbought, oversold, trend following techniques or whatever, they most likely would start from the lowest low. The problem with that is if you always assume that patterns and trends start from the highest high or the lowest low, you're never going to get the pay less attention. The ideal time frame is indicated by diagram A and diagram E. Those are pretty much the range of complexity that you should see on a chart. If it's anything like this or like this, that's presenting you with too much information. It makes it very difficult to come to accurate conclusions. And this small amount of information, and this especially, is not enough to arrive at any kind of conclusion. So your complexity of your chart has to fall into a particular range to arrive at accurate conclusions. So what does this mean? Let's say that you're following a chart on a daily basis. It starts looking like this. Well, what you want to do is create a weekly chart of the same time frame so it starts to look like that. And you pay less attention to this daily chart and more attention to the weekly regarding that time frame. And when you're studying the daily, you should start to focus in on a much shorter time frame that you can once again analyze.
Does that make sense? Okay, let's go to the next chart. Innovation number 3 is what I call self-definition. This is the market defining where you start and stop your patterns, the market defining what constitutes a degree. Most people, if they were to look at this chart, would immediately probably start doing the analysis from this lowest point here. Maybe from the beginning if they're doing just pure mathematical analysis, but if they're doing any kind of overbought, oversold, trend following technique. For a starting point. So whatever, they most likely would start from the lowest low. The problem with that is if you always assume that patterns and trends start from the highest high or the lowest low, you're never going to get the coherent behavior that you need to accurately predict market action. Unfortunately for most of us, I guess it's analysts and traders, the markets don't conveniently always terminate pattern right at the top or bottom. The trend, visually speaking, yes, may terminate at that point. But from an analytical standpoint, no matter what kind of technique you use, you need to realize there's certain kinds of behavior that have to happen near top or bottom to tell you whether that highest high or some later lower high or some higher low after the low is actually the beginning of the new trend. So let's say you're using an overbought, oversold indicator of some sort. This is the bottom you're using the analysis on. Maybe it indicates it's very oversold, but the trend of the market, a real powerful move, doesn't start until the next higher low. And that's an indication that you're starting your analysis from an improper point. Let's go to the next chart and I'll show you how this is actually determined. When you're attempting to start an analysis process, or it's an ongoing process, you first would find the highest high or lowest low, figure out which direction you're trying to predict. If the market's generally going up, then let's start off the bottom, which in this case it's doing. So first thing you want to do is mentally or actually draw a vertical line right through the direction you're trying to predict. You first would find the highest high or lowest low, figure out which direction you're trying to predict. If the market's generally going up, then let's start off the bottom, which in this case it's doing. So first thing you want to do is mentally or actually draw a vertical line right through the bottom of that lowest point. Then you want to go backwards to some previous important point. It doesn't matter because everything's relative under the wave theory. So the further back you go, the bigger the degree you're analyzing. So we're just going to go back a short period of time to an important, relatively important high here. Market, we're going to call it point A. The distance between the starting line and point A will be called segment A for this purpose. The distance from point A horizontally until it hits the next piece of price action will be called point B. And if you measure the distance between point B and start time, you get segment B. Now what you want to do is you want to compare the time between segment A and segment B. And when you're doing wave analysis or any other kind of analysis, you want to make sure that segment B is always smaller than segment A. If it's not, you're starting your analysis from the wrong place. Okay? Segment B always needs to be smaller or the same size as segment A. It should never be larger. If it's larger, you're starting your analysis from the wrong point, or the market hasn't started a new powerful trend that will create a complete reversal of the previous trend. It may just go sideways or something, but it's not going to do what this did here. So if you can't achieve that kind of a result, you have to keep moving your start timeline, mentally or actually, further and further to the right of the chart until you get to some low where segment B is smaller than segment A. That's where you start your analysis. Yes, this you can see between here and here, segment A is too small in relation to B, so B is too big. You move it to the next higher low, segment B is now smaller and segment A is larger, so now you can start your analysis from this point. Now, this has a very serious application for neo wave and Elliott wave. Yes? It would just, whatever it takes to apply this process, there's no specific rules there. If this process shows that segment B is smaller than segment A, then you're safe to assume you can start at that point, whatever that point happens to be. So this is the market telling you what to do instead of you putting in your own opinion. So obviously it regiments the approach a great deal and avoids a lot of subjectivity. So every one of the neo-wave techniques that I'll talk about today is a step further away from subjectivity and closer to complete
technical science. Any other questions about this approach? Yeah, you could have gone to this point here and then drawn it across to whatever point touches horizontal. You want to make sure your line is perfectly horizontal to the next touch point. And like I said earlier, the further back you go, the bigger degree you're analyzing. Any other questions? There's some? Yesterday, I listened to another algorithm wave, and supposedly it started when it dropped out of bed. What started? The wave started at the bottom. Here? Yeah, because that looks like it just went straight down. Dropping out of bed. From here? Right. Okay. But that is not the start. Well, as far as the uptrend is concerned, no. It may be the conclusion of the downtrend, but I know from experience, if you want to reach high reliability in your pattern development and your forecasting accuracy and trading accuracy, you have to adopt these approaches. Otherwise, there's going to be a lot of flexibility, and it's going to be up to your opinion and experience, which is something I think you want to, at least I want to avoid, because I don't want to be putting my own emotions into the situation. I want the market. Does that make sense to everyone? Okay, let's go to the final innovation. This has to do with neo-wave confirmation, self-confirmation. This is where the market determines whether you've done your homework correctly. You don't have to ask anybody. It's not up for debate. It has nothing to do with opinion. You can arrive at these conclusions very objectively, and it's sort of like grading your paper. Whenever you finish an impulsive formation, upon the conclusion of the fifth wave, whether it's going down or up, it doesn't make any difference, there's two stages of confirmation that are required to guarantee that that analysis is correct. Stage one is when the market breaks the trend line drawn across waves 2 and waves 4, or wave 2 and 4. What needs to happen, it needs to break that trend line and touch it or break it in less time than the fifth wave took to form totally. So the fifth wave took 5 days. You need to get down to that 2-4 trend line in less than 5 days. If it takes more time, your count's wrong, or wave 5 is not finished. Okay, there's no debate about that. This is an absolute guaranteed 100% work. I've never seen an exception to this in 14 years. Any questions about this? Second stage of confirmation has to do with when the fifth wave of a pattern is completely retraced. This is the clincher, you might say, to your wave analysis process. If you get this second stage, the probabilities of accuracy approach 95 to 100%. At stage one, it's more in the 70-75% range. There's still some things that might happen which would alter the accuracy of the situation. Once you get both stages of confirmation, you can rely almost 100% on that analysis. You can lock in this structure as a 5-wave move, never to be changed again, and then go on with the next part of your analysis. Question? No, that this has to happen. The indication that that is an actual, absolute, completed 5-wave move is about 70-75%. When it breaks this level, then it's basically 100, as close as you can get to 100%. So in other words, these events have to happen. If you don't get stage one, your count's definitely wrong. Then it's still in the 75% range, and you have to consider other possibilities to be safe, but you don't know for sure. The only stage 2 gives you that absolute confidence. Yes, same as stage 1. You have to reach the beginning of the trend in less time than the fifth wave took to form itself. There's another parameter here that I didn't mention. It also has to do it in less complexity. So if wave 5 took 5 clear subdivisions, you have to get to the beginning of wave 5 in less than 5 monowaves. So if you have 5 monowaves within wave 5, the reaction to start the new trend has to be 5 or less, preferably 3 or less. So these things, I guarantee you, always work. And I think some people in here have taken my class before, I assume. Has anyone taken my personal training class over the telephone? Oh, I guess not. They're quite frequently amazed that you can explain price action to such an incredible degree of specificity. You know, talking about exactly how far a market needs to go, how long it needs to take to get there, how complicated it's going to be going from point A to point B, and it just doesn't seem logically possible to most people.
But when you go to all the trouble to do the things that I'm talking about, it does become possible. Yes? How does Neil Wave address the original rule that the odd wave before Oh, that's an absolute rule. That's an Elliott wave rule that occurs before anyway. That definitely. Nothing about the old orthodox approach have I changed. So all the standard rules are still there. I've just added on top of that to make it more scientific. Any questions? Okay, same concept applies to corrective patterns, but frequently, because of the way corrective patterns move, the trend line and complete retracement are at the same point. So you sometimes will achieve stage 1 and stage 2 simultaneously during flat corrections or sideways market periods. Not all the time, but sometimes. If it's not, if the trend line is not horizontal and you don't achieve that confirmation at the exact same point, then the same rules that apply here apply here. You still have to get to the trend line in less time than wave. The last wave took to form. It has to be less complicated, and it has to reach both the trend line and the complete retracement within that time frame. Okay? Okay, let's show some examples of this on the next chart, page 28. If you were looking at this chart, which a lot of people might come up with this analysis, I'm not sure, probably more people would put wave 2 here than over here, but if you had wave 1 here, the problem is that the reaction after wave 1 is over is too tiny and the recovery is too severe to indicate that your trend really terminated with the first high. So an event like this, if this really is wave 1, you'd have to move the termination of wave 1 to the right. You never want to have, I didn't mention this earlier, but you never want to have the initial reaction off of a higher low retrace more than 61% if you're going to consider it the start of a new trend. So this extreme recovery after the initial drop indicates that this has to be the start of the new trend, the high to the right, not the highest point, because the reaction after the initial break is too severe. That means the market really isn't trending yet. It's still working on finalizing the uptrend before the new downtrend starts. And notice by taking this approach, your trends always start with a nice, quick kickoff, which allows you to begin solidifying specific kinds of behavior that always occur from the very beginning of a trend. And if you don't do this, like I said earlier, you may have action off of a higher low that sometimes produces this action, sometimes it doesn't, and the behavior just isn't reliable if you don't determine exactly where the new trend started. Yes? What about, in opposition to that, you often get a situation where you look at the one there and the next time it goes higher, but an oscillator you get convergence. There's often a good signal for a high looking at oscillators, and yet it wouldn't certainly go on more than that. All I can say about oscillators in general is that you need to realize that most technical approaches that are relatively simple mathematical approaches identify market behavior. They're not really identifying overbought, oversold, support and resistance. They're identifying a certain type of behavior. And that behavior falls into the two classes of Elliott wave or neo wave, impulsive patterns and corrective patterns. So what frequently happens is that when you have a powerful move up, the market reacts, you get another move up that's much slower and it's part of a correction. It'll indicate that the market momentum is slowing down and you're reaching a top. It may be a top for a long time, it may be a top for a short time, and you may get a little reaction and start another huge trend. It's hard to say, but what it's identifying is corrective action, and it can be very deceptive if you don't know whether that corrective action is concluding a trend or is part of a drifting upward pattern that is eventually going to be followed by a much more powerful advance. Does that make sense to you? I was referring just over at one, just that little blip up. Uh-huh. Did I understand you say that that little blip up after one, that can't go beyond 61%? Right. The first reaction, and then the question is that the market broke down from the high and then retraced more than 61%. That event tells you that the real downtrend hasn't started yet. The market's recovering too much of a decline to say we've started a real new trend. So if you don't define what constitutes a trend, then you're not going to be able to use all these techniques that we talked about and really regiment your approach to a point where everything constantly is behaving the same way. Most people are always used to having to make exceptions all the time to behavior. I don't have to do that with this approach because it forces everything into specific kinds of behavior based on using the right kind of data and all the things I've mentioned. Okay, the other problem here, if you notice the end of wave B, the market broke down again, retraced too much before it really started trending. And if you were to draw any trend lines, you can see that this low here did not break any previous trend lines. So there was no confirmation of the conclusion
which means wave B should be moved over to this point. That's where the trend actually started. And the retracement is close to 61, I don't know exactly. What? C started over from the second. Yeah, C would start here along with the conclusion of wave B, not at the higher point. Okay? This is a big problem for most people because almost everyone wants to terminate patterns right at the top, right at the bottom. If you do that, your analysis will just never be consistently accurate under wave theory. If this, wait, say it again? This here? This is fine. Yeah, the reaction is violent, it's fine. There's no problem with the way that. You notice how it quickly moved up, didn't retrace too much, and continued. Because the initial reaction is retraced more than 61%, indicating you hadn't started a new trend. And because if you drew a trend line across these lows, which is an important way to determine conclusion of patterns, you have the decline here, and the market retraced more than 61% of the initial drop. Okay? So does that mean that we should expect the market to still go higher after C? Oh, absolutely, yeah. The minute C's finished, first of all, when you have a B wave or a pattern that makes new highs during a correction, that's a sign of strength. We haven't gone into force in the application of what you might call neo-wave force, and we won't go into that today, but force is an indication based on market, the market's trend and how powerful it's going to be. You're going to recognize this in the way the market behaves. So based on the B wave making new highs here, that's telling you in the future the market's going to have a very powerful uptrend. That's an indication of future force. And that's why the correction is drifting upward. But a lot of people would determine maybe this is the third wave or the C wave of an ABC or something like that, because they're not carefully analyzing the structure and they're not allowing enough time for the corrections to take place and so forth. So just as a general rule, remember when you make new highs during corrective action, the correction's not over, but you've made a new high during its formation, that's a sign of future markets. Last pattern, because what I'd like to do is now make the transition. We only have a short period of time now. Make the transition into what I consider to be a very important application of all these things that we've talked about. That's fine, that's fine. Taking all the concepts we've discussed today, plus additional ones, into account, I'm going to present to you at the very end what I consider to be the correct wave structure for the U.S. stock market. This has importance because I assume most of us live in the United States, and this has to do with the U.S. economy and what's going to happen and so forth. This is the standard, popular, orthodox Elliott wave count that's been, I'd say most Elliott wave analysts believe this to be true. If this count were correct, it would indicate that we're obviously toward the end of a major, huge, long-term growth phase in the U.S. economy, at least as far as the stock market is concerned, that eventually we're going to have to go through a big reaction. And if you're familiar with some of the other tenets of the wave theory, we have to break down into the fourth wave range or lower to start to get into the correction of this entire five-wave move. But if you remember some of the neo-wave concepts, some of the other things that would need to happen is we'd have to break this 2-4 trend line in less time than wave 5 took to form, which would mean we'd have to drop maybe less than 50 or 40 years back down to about 500 on the Dow Jones. I want to make it very clear, I do not believe this is going to happen. This is what this count implies. I think it's not even, this count is not even remotely possible, but we'll go into why in a minute. But this is, just wanted you to recognize that this is the standard count. Let's go to the next chart. The reason this count is not possible just from one piece of evidence, if you think about impulsive activity, you normally think of the middle part of the pattern maybe being the longest or the most exciting or the most dramatic, most powerful. If you look at this advance over the last 200 years, the absolute deadest period of the entire 200-year market advance happens right in the dead center of wave 3, typically thought of as the most powerful, most trendy, most exciting phase of an advance. All you see here is one quick move into this corrective mess and one quick move out going into 29. The rest of it's just a bunch of corrective activity. Because of this, it makes it impossible for this count to be correct. Because if this is corrective action in the dead center of a third wave, and there's only 2 primary advances, and the whole rally looks like a correction, this count can't possibly be right.
the implications of this observation are so profound that the last time I mentioned this, Sherman, were you at that meeting in 1988? He's the only one who can vouch for me probably on this. At that meeting, I indicated, this is 6 months, maybe 8 months after the crash in 1987. I indicated that the crash low of 1987 would never be broken for 200 years. People thought I was out of my mind. They practically laughed out loud when I said that, because this is, at a time when the consensus was so bearish on the stock market, everyone knew we were going into a depression. The implications of the count that I'm going to present to you, and what I talked about at that particular meeting, were that the stock market was going to be progressing and advancing for the next 70 years, going into about the year 2065. Because of the fact that this is or has to be considered a corrective pattern unless the information we have is wrong. I can't give good analysis off of wrong information. But everything's worked out very nicely over the last few years, and you'll see that in a minute. But if this really is correct information, it's a corrective rally happening right in the middle of what appears to be this huge bull market in the U.S. economy. So let's go to the next chart. Yes, in the back of Cycles magazine in 1988, this is the one that created all the controversy. I didn't know what I was talking about. Everybody thought I was crazy, couldn't do Elliott wave analysis. And all those, of course, turned out to be wrong. And the only analysis that actually has been correct continuously for the last 8 years is the analysis presented in the back of that article in Cycles magazine. This is what I proposed in the article, that we were going through what I call, and what, I'm not sure if, I don't think Elliot talked about this, but this has to do with complex corrective activity that is stretching upward with the trend. In other words, instead of the market being able to go perfectly sideways or down, the future force or power of the market is so great that the correction is stretched upward. And that's why this looks like a corrective pattern, because what it relates to is a corrective rally within a very complex upward slanting correction that took, I think, almost 100 years. Okay, it's not correcting anything. It's corrective behavior. When it's finished, then you start impulsive behavior again. Now notice the dramatic differences in behavior that you see. This, by the way, is incorrect because this is connecting European data to U.S. data. U.S. data indicates by backwardly applying rules indicates that this pattern started around here. So wave 1 is a lot longer than it appears to be in reality, or from the data that we have, because they started recording data in about 1789. So if you imagine wave 1 is a lot longer, down to about here, this advance is actually shorter. This whole upward drift is concluding a huge double 3 running second wave correction in 1949, and only myself and R and Elliott agree that we had a triangular correction at this time frame. Everyone else assumed it was something else. You'll notice the minute that it finished, the market began its largest, most powerful, most persistent advance in the history of the United States. And it's even continued with the advance here. What does that tell you? That tells you the market isn't slowing down. We're moving in to a period of increasing momentum. The market's just beginning to get underway. Now, that's hard to believe. No, as of the last 15 years. So this starts in about 1982, and it's been going up ever since. I don't have a blow-up of this period, which shows that this period here is almost, well, this period here in the square is identical in design to the bigger one, and on a smaller basis, this period is also similar to this one. So we're continually stretching up more and more and more, and more complex corrective patterns getting stronger and stronger, while at the same time, most people in the U.S. are getting more and more convinced the bull market has to be coming to an end. It just can't possibly keep going on the way it's been going. Whereas this implies a completely different scenario. You can see how the thrust out of this triangle has been achieved just like it should be, and we're actually probably going to get another one of these sometime down the road. It's hard to say at this point in time when it's going to happen, but another huge advance. Eventually, on a log scale, this move has got to be bigger than this move. Now, if you do that in your mind, you'll start to realize we're talking about the Dow going up to 10, 20, 30, 40, 50,000 over 20, or actually about 60 years. This sounds outrageous to a lot of people. I've been saying it for years. The problem, when you think about it in terms of arithmetic numbers, it sounds ridiculous. But when you think of it in terms of historical logarithmic percentages, it's very plausible. The stock market from this low here up to the present has risen about 1,000,000% in about 200 years. We're talking about the market going only up about 5,000%
in another 70 years. Extremely possible. Okay? Any questions about that? There's one more chart I think we have. This is the forecast that Sherman, I think, had witnessed, or at least I talked about to some degree. And this was also in the back of that Cycles article in 1988, September of 1988. This is the forecast I made within a few months of the crash of 1987. As right before and right after, and as it was happening, my expectation was that that violent behavior was the beginning of a large upward rising, contracting triangle that was being stretched up with the powerful trend of the stock market on a multi-century basis. As you can see, this is what's resulted in that time frame. It's the only long-term Elliott wave count that has not been changed for 8 years, or say Neo wave count, I guess, but it has not been changed for 8 years. And I'm not completely sure yet, but I think there's a possibility that we finally finish wave 2 that started back in 1966. And that's why the recent advance is even more powerful than anything we've seen almost our whole life, at least from the Dow Jones and the S&P. So, Can you say that again? The movement of the market from 1956 to 1994 was a wave 2 correction? that's what the wave structure indicates, yes. That if you go back one more page, Sherman, can you flip back one? Okay. It's bold to say that the 80s was corrected back. Yeah, I know. A lot of people don't understand that because they're thinking in terms of bull markets being trendy kind of behavior. Remember, we're dealing with the nature of action. We're not dealing with which direction it goes. We're saying it's gone up, but its internal nature was of a corrective nature, and the nature that indicates that there wasn't enough public involvement to be the real bullish trend, a real powerful trend. This pattern here is being reproduced. If you can go back to the other chart, just look at that real quick. That's being reproduced here, but this is the tail end of it. If you remember on that other chart, there's a triangle finishing the pattern. This is that triangle, but you'll notice it keeps stretching up more and more and more because we're getting closer and closer and closer to a powerful upside explosion in the U.S. stock market. And when this gets underway, it'll just be probably the biggest fat. Okay, so let's go ahead and get started. Want y'all to understand that this project is something I've been working on since the year 2000. It's been a unbelievably complicated project. When I did my book, Mastering Elliott Wave, I worked on wave theory for about 5 years. And, I thought that was a complicated project and took a lot of my time, and especially chapter 3 of my book, if any of you have read that, took me a year just to do that chapter. But river theory, even though I thought it would be a lot easier to do, has turned out to be massively more complicated than predicting markets with wave theory. So it's actually taken me 23 years to get to this point to where I feel like it's basically complete and that I can start moving on to other things. So anyway, the whole goal of river theory was to make trading easier. It was around the year 2000 when I first realized that the stock market was beginning a multi-decade correction, that I realized that I had to do something about that, because in wave theory you can't really predict corrective environments very well. So give me 1 second. I got to check. Magellan has apparently sent me a message. I got to see what he's saying just to make sure I'm not making any mistakes here for today. Okay, he just said sorry, he forgot to change the time. Okay, so I knew in the year 2000 that I would have to start working on a different approach, because wave theory is great at predicting trends, but not so great at predicting corrective environments, even though I've improved that ability quite a bit over the last 40 years. But I knew that this was going to be a problem. So the minute the bear market started in the year 2000, it was going to be an issue for about 20 to 30 years. So
I'll get to that a little bit more on the next page, but first of all, let me tell you what today's goals are. Is to show you the concepts I've been working on for the last 23 years that helps to create an objective, logical, unemotional way of trading that I really don't think exists anywhere else in the world. Today's presentation is an overview of river theory and how it's able to do this. I won't be going into any extreme detail like what I do for the private classes. So if you're interested in those, you can write to Magellan@neowave.com and ask about that. Also, there's been an incredible amount of plagiarism and you could say theft of my ideas and concepts that is going all around the world. This has been going on for a really long time. I think river theory will be even worse than what happened for wave theory because wave theory is a lot more complicated to understand. But river theory is easier to understand and implement, but it is very difficult to get it to the point that it is, to design it, logically organize it, and all that kind of stuff. So I just wanted to be clear that this is the exclusive right of NeoWave Incorporated. I don't authorize anybody else in the world to present this or teach this material. So today I'm going to show you the software that's been under development for about 23 years by me and Stefan, my trade station programmer. And the goal was always in my mind, always had this goal of organizing, objectifying, perfecting anything that I'm working on regarding markets. So the whole goal of this software is to make trading an objective, rational, logical kind of process, and that it helps to eliminate all the problems of when you're trading without a plan to manage profits and losses in a very objective kind of way. That also can cause a lot of emotion and fear and greed, and I'm sure most of you have experienced this roller coaster ride of emotions that's caused from the forecasting process. So when you add to that no specific plan for how to take profits or exit and what the percentages are going to be and what the circumstances will be to create those conditions, then it makes trading a really emotional process. So the bottom line is forecasting and trading without any kind of plan can virtually guarantee emotionalism, irrational reactions, and bad reactions to price and news. So it nearly assures failure overall. So the goal is to try to eliminate those things, which has been the process I've been working on for 23 years now. So in my early days, before I understood any of this stuff around the year 2000, I assumed that forecasting accuracy or precision was the key to success in trading and investing. Most people believe this. That's just the way 95% of the population starts their career in investing, with the assumption you have to be able to predict accurately to make money trading. I spent years and years working on perfecting wave theory with the idea that perfect timing, perfect forecasting was the way to do well. During my first 2 decades, I was using this approach, and sometimes I had great forecasts, great trades, and then other times it was not so good. So it was a roller coaster ride, as I mentioned to you earlier, both from a forecasting and an emotional perspective. And it was this, not the roller coaster part of the forecasting wasn't the main problem for me. It was the roller coaster ride of the account going up and down all the time because of the forecast being right and then being wrong and then doing stupid things and you getting all emotional about what's happening. The worst thing that happens is generally you'll have a forecast and your forecast is bullish and you're going to stay in a position even though it keeps losing money over and over and gets worse and worse. And you keep saying, well, my forecast is bullish, so I'm going to stay in. And that creates disaster for trading accounts. So you always have to have a point where you give up, and you need to have a target that's logically determined so that you're not getting involved in the emotionalism of trading. So in the year 2000, wave theory, or NeoWave at least, warned me that we were beginning a 20 to 30 year correction, which is still ongoing, by the way, despite all-time new highs. And I knew that wave theory doesn't allow me to predict corrective environments nearly as well as trending environments. So I had to figure out a new way to deal with markets, and that's when this process began. I had no idea how long it was going to take, but that's when it started.
And over the next 3 or 4 or 5 years, I'm not sure exactly when the event occurred, but I started to realize that the progression of stock prices in a market is very similar to the way water progresses in a river. And so the next page that I'm going to show you is the result of 2 decades of work, thinking, trading, teaching. Um, this just has gone on practically day and night for 23 years, but this was probably completed about 3 years ago. So if you look at markets in terms of a river environment, you have a south bank, a north bank, you have your turbulent zone, which occurs near the perimeter of the river. So the market sort of drifts and is choppy in this area. And that would apply to the top portion if you're beginning a downtrend, the bottom if you're beginning an uptrend. Then you eventually reach a point where the market starts to break out and starts to trend more. And if it's lucky enough, then the stock will begin to accelerate way beyond the speed of the average stock. And those are the ones that are the most potentially profitable over the long term. And you're trying to find these that are moving the quickest in relation to a universal standard. So you have monthly price action, which is mostly fundamentally derived. You're dealing with, all the fundamentals of a stock and sales and profits and volume flow and things like that, institutional demand. When you move to the weekly time frame, then you start dealing more with technicals, mathematical moving averages, trend following kind of approaches. And then when you move to the daily time frame, this is the most psychological environment, the most emotional, because people are dealing with generally smaller amounts of money. Smaller amounts of money automatically make you more nervous because you can win or lose, 25, 50% of your account in a day or two, depending on what the market's doing. So the faster a market moves, the more the public is involved, the more emotional things get. The slower it moves, the less interested they are, the more it's institutional buying and selling that's taking place. So let's move on to the next page. So I'm going to break each one of these up into the different river zones. Nikola Tesla, if y'all don't know, loved the number 3. And as I've studied markets over the years, I'm realizing, markets are also very connected to the number 3. So everything seems to be divided into 3 parts, 3 types, 3 categories, 3 behaviors, and so forth. So that all falls into what's on this page here. You have 3 different zones, 3 different types of behavior, 3 different speeds, and so forth. So it's all very interesting the way it breaks down like that. Okay, so when it comes to river zones, the bottom, if we're dealing with an uptrend, the bottom zone would be the turbulent or drifting zone. So it's either going nowhere, which is what I call a lake environment, or it's starting to drift, which is where the river concept starts to take place. And I would be in the bottom 25% of the river. Then move to zone 2, that's when the market starts to break out or trend. And that's when mathematical moving averages, trend following things start to work. And that's in the 25 to 45% of the range. And then you move to zone 3, which is the acceleration phase. And you say it's a hyper oscillating phase where it might be oscillating but at a very fast rate in a particular direction. And that occurs in the 45 to 55% range of the river. Then you have the different forces that are impacting each one of those zones. Like I mentioned earlier, you have the fundamental zone, which is mostly volume flow. When I say that, I'm talking about
large-scale buying by institutions, which occurs when the public is getting out and the big traders are getting in, or the public is getting in and the big traders are getting out. Realize that big traders can only get in when the majority of the public is getting out. If you have $1 billion, you need 1 million people with $1,000 or 1,000 people with $1 million to get out so you can get in. So the fundamental forces that occur at market extremes or the top or bottom of a river is always the public is scared and they're getting out in mass, or they're excited and they're getting in mass, while the professionals are doing the opposite, because that's the only time they can get in or out. And this will also be instigated or propelled by sales and profits. So these large scale funds and traders are looking for profitable companies, good sales, good management, all these things that would be under the fundamental category. Once they've gotten their positions, then the market starts to transition into the trendier phase where some of the more professional and regular real-time traders start to get involved. They're looking at moving averages and channels and things like that, which will start to have an impact and be possible to draw and to calculate once the market has moved away from the top to the bottom. You can't have channels until you start bouncing off the lows or off the highs, and moving averages won't kick in until you've moved comfortably off of a low or off of a high. So that's when the technical part starts to kick in, and then the public starts to get in, the smaller traders, when the news is really good or the news is really bad. The markets are moving fast. They see people making a lot of money really quick. They get emotional, fear and greed take over, and the public just starts to dive in, which then allows the bigger traders to start getting out. Okay, and then we have the what I call the elements. These are the 3 elements of market control. There's only 3 kinds of trading that you can ever do in a market. It doesn't matter what system you use, how you approach markets, what formulas, it doesn't matter. There's only 3 things you can do: buy near the bottom, buy near the middle, or buy near the top of a range, whatever that range is, daily, weekly, or monthly. And that means you're either trying to pick a bottom when the market's going down, or you're trying to buy a breakout when the market's making new highs, or you're trying to get in on a retracement after you've seen the low and the high. So those are the only 3 ways you can trade. And in river theory, they're color coded, and I call them bargain hunters, which I color coded with blue. Trend followers are color coded in purple, and top and bottom pickers are color coded in tan. Each one of these has a different characteristic to them, which allows you to design your entry strategies and channeling and entries and exits differently depending on who's in charge of the trend. So if bargain hunters are in charge of the trend, the market will be very boring and sort of choppy, which means it's typically going to occur near the bottom of a river, and it takes a lot of time, sort of an accumulation kind of process. Trend followers are those who are using moving averages and buying into new highs or selling into new lows. And then the top and bottom pickers are generally using things like wave theory, overbought, oversold indicators, or things like that. So each one of these is going to be separated in river theory, and it allows you to know who's in charge of a particular time frame and what kind of trading they're going to do, how they're going to enter, how they're going to exit, and what kind of channeling they're going to use. So here's an actual picture from TradeStation, which was taken yesterday, I think, showing the 3 different types that just happen to exist. I picked this specifically because each time frame was being controlled by a different group of traders. So here you can see it's sort of a brownish color, but it's supposed to be tan. This is the time controlled or the top and bottom picking kind of environment. This is an environment where the market will rally very quickly and reach tops or bottoms and go through panic kind of events. This little yellow bar is a panic rally in the direction of the trend. When you're in a bargain hunting environment, or what I call a bias environment, it tends to go sideways and back and forth a lot, so it doesn't trend that well, and then it has quick advances or declines after it consolidates for a while. And then the trend following environment, which I call a price environment, tends to be very sine wavy and just zigzags and snakes its way up and down over a period of time. So you have very
oscillating trending behavior, mostly sideways behavior with occasionally erratic ups or downs, and then very powerful uptrends that are followed by very violent, powerful reactions. And then I mentioned earlier these other things, the turbulence zone, the breakout, the trending acceleration, and the fundamentals. So this chart shows all of those things all at the same time. So you have the psychological environment, which is determined by river theory, telling you objectively when to get in, when to get out based on who's in charge and the kind of trading that they do. You can see this little green bar right here. That's indicating in a trend following environment, this would be a time to go long on a daily time frame. That's why it's green. You don't see that on any of the other charts. This next section here has to do with the fundamentals and technicals sort of merged together. Fundamentally, this is, and technically, this is showing accumulation or distribution in a market. When it's green, it's indicating the market's under accumulation and moving, has upward momentum on a monthly basis. This indicates the market has broken out to new high ground and has maintained that new high ground. And this shows the oscillation trend-wise. So it's using mathematical trend analysis to show the market's in an uptrend on a daily basis. So this is mostly price-based with some demand volume flow incorporated into this chart here. And then the color at the very bottom shows the speed of the market. So you have these different zones in a market which are based on speed. So the turbulent zone will be the slowest moving zone, could be between about 0 and 30% overperformance compared to a universal standard. And then the trending area generally runs between 30 and 80% of the universal standard. And zone 3 is when you're accelerating, it's moving more than 80% faster than your average stock. So that's what this indicates down here. That means it's accelerating on all time frames. That means trading is viable on all time frames. So you can use this information down here to decide which time frames to trade objectively. You know, most people think, well, I'm a day trader or I'm a long-term trader or whatever. But river theory allows you to objectively pick the time frame that's best to trade. This is indicating all three are tradable currently. Most of the time it'll be gray for daily and maybe weekly, sometimes for monthly, but it picks by its coloration which time frames are safe to trade based on how fast the market's moving. Obviously, when the market's moving really quickly, you can get in with smaller stops and make more money quicker. If it's moving sort of moderately, then weekly trading would be better. And if it's moving really slow, then you have to have really big stops and be very patient. So the speed of the market is a crucial part in deciding which time frame to trade. So river theory at the bottom helps you decide which time frame is viable for trading. And the next mostly technical row reinforces the direction. So here's a market that's moving up quickly in relation to a universal standard. And then it's saying not only is it moving up, but there is demand and momentum, which makes this time frame safe to trade. Over here, we have the proper speed to make this time frame safe to trade. We have the price action breaking to new high ground, making it safe to trade. And we have NRT, which are Neely River Theory, which gives us the controlling element, what kind of control exists, what kind of channeling will exist for this particular pattern, and what we're waiting for entry. Right now, there is no entry indicated because we would need a pretty significant sell-off to allow for that, but it's not currently present. This is the only time frame where we have the speed is appropriate, the trend is appropriate, you know, the market's making new highs, and it's under the control of a group that is currently giving a buy signal. So this would be the only time frame on this particular chart where a buy could be initiated. And river theory knows all three types of traders, as I mentioned to you earlier. There's the bargain hunters, trend followers, and top and bottom pickers. Each one of these uses a different kind of stop strategy. So based on the point where all of these three traders will no longer be in charge of this uptrend is where this stop exists. Same thing for the weekly, you can see it here, and the same thing for the monthly. So when this level is broken, that means no matter who was in charge of this uptrend, all three of them have now lost control, and now the sellers are in charge, and it will produce a stop above the market when that happens.
So this is the maximum objective stop based on all three types of trading, based on how each of them places stops, based on how each of them places channeling. So we know the maximum objective ideal stop that should maintain itself while this trend is in effect. Initially, the stop would have been right here, then it moved to here, then it moved to there, then it moved to here. And right now, based on the lowest stop of all three of those that could potentially be in charge, which is bargain hunting, trend following, or top and bottom pickers. This is the maximum allowed stop currently, no matter who's in charge, and even if that control changes, so you know exactly where to put your stop objectively, no emotions, no forecasting. Let's move on to the next chart. So Neely River theory allows you to objectify all aspects of trading, which allows you to remove the dangerous emotion that makes people do lots of stupid stuff. So you don't need to predict the direction of the market. That is determined by volume flow and momentum, which is on the monthly chart. You don't need to predict the trading time frame. That's determined, lost my track here. That's determined by how fast the market is moving in relation to a universal standard. So you know if it's moving slow, medium, or fast, and that dictates which time frame you want to focus on. And you don't need to predict when to enter or when to exit, because that's determined by the competition between the three elements, the top and bottom pickers, the price, the trend followers, and the bargain hunters. So by knowing who's in charge, sorry, I'm trying to pick these charts properly. When you know who's in charge, then you know how to enter, what kind of channeling will be used, which means you can objectively determine right here that this is an entry point without emotion, without forecasting. You don't necessarily know what's going to happen. You don't know where the market's going to go, but you know exactly where to put your stop. And then I'll show you all after a while how we can use larger charts to decide where to exit. एक बज चुका है.
कुछ फास्ट मूवमेंट्स आ सकते हैं। जैसे मार्केट में वॉल्यूम बहुत तेजी जा रहा है, सिचुएशन सही नहीं है। वेव्स को देखना पड़ेगा, तो वेव्स कैसे काम करते हैं। ऐसा। टच कर ले भाई, कल नहीं होता तुझे, करके रहेगा ना तो टच। Three, 94, 94, 94, 94, 94, 95. Fast, 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 fast. And this is going to 95, 96, and 97. Go, 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 go. To 25,000 nearby, very crucial moments. Fast. तेरा पॉइंट बहुत ही हेवी दबाव है 25,000 के आसपास। एक मिनट बचाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार। ये चाहते हैं इसको 10-15 के आसपास लेके जाए, 1-15 का। वही बोलता है भाई।
strip on 14 days, 21 days, 35 days, and 50 days if you want to include. Jump, 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 jump. By the cross sections under 21 days. 40 days. इसे बोलते टाइम निकालना किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं। पंद्रह का वेट करके जाएगा साइड में भी कुछ। वेट करो थोड़ा सा। 98 गया, देखो 98 तक टारगेट फिट कर गया। अब ये दोबारा फिट करने वाला है 24,500। हमने 5 मिनट में कभी भी टच कर सकता है, कभी भी करेगा जरूर। फुल स्ट्रॉन्ग पावर है भाई इसमें, पावर यार। ये गया 98 पॉइंट कुछ गया 97 97 95 98
Oh, okay, minutes complete. $99 process. और ये 25,000 क्रॉस, ये 25,000 टच कर किया है भाई।
किस्मत की। ट्रेडिंग में हार सिर्फ पैसों की नहीं होती, टूटती है उम्मीद, गिरता है आत्मविश्वास और एक आवाज कहती है छोड़ दे ये सब, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली जंग, और इसी जंग का पर्दाफाश करते हैं दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टीनबर्गर। वो एक बात सब कहते हैं, द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर रिएक्शंस टू द मार्केट आर। और यहीं से शुरू होता है ये सफर, एक ऐसा सफर जो चार्ट से ज्यादा तुम्हारी सोच को बदलने वाला है। आज हम जानने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के वो 10 सीक्रेट प्रिंसिपल्स जिन्हें समझे बिना कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटजी टिक नहीं सकती। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ब्रेट ने सिर्फ किताबों में नहीं लिखा, बल्कि सैकड़ों प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जिंदगी बदलते हुए जिया है। ये प्रिंसिपल्स चार्ट्स, इंडिकेटर या पैटर्न की बात नहीं करते, ये तुम्हारे मन, तुम्हारे डर और तुम्हारी पहचान की बात करते हैं। अगर तुम भी हार कर थक चुके हो, अगर तुमने खुद पर से भरोसा खो दिया है, तो शायद ये 10 प्रिंसिपल्स तुम्हें वापस खुद से मिलाने आए हैं। लेकिन सावधान, ये कोई आम प्रिंसिपल्स नहीं है। इनमें से एक भी प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कभी करोड़ों तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि ये 10 नहीं 10 ताले हैं और हर प्रिंसिपल अगले ताले की चाबी है। अगर तुमने एक चाबी खो दी तो हो सकता है दरवाजा कभी खुले ही ना। इसीलिए ये ऑडियो को लास्ट तक जरूर सुनो, क्योंकि हो सकता है आज तुम वो सीखने वाले हो जो तुम्हें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है पहचानो खुद को। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन यही वो कड़ी है जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। और यकीन मानो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी गुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्रेट स्टीनबर्गर ने एक जगह लिखा है, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट जस्ट मास्टर मार्केट्स, दे मास्टर देमसेल्व्स। और यही फर्क है एक एवरेज ट्रेडर और एक मास्टर ट्रेडर में। अब सवाल ये है, खुद को समझना मतलब क्या? इसका मतलब है तुम्हें ये पता हो कि तुम कब घबराते हो, कब जल्दी लालच में आ जाते हो, किस वक्त तुम्हारा दिमाग ठंडा रहता है और कब वो आग पकड़ता है। क्योंकि मार्केट तुम्हें नहीं गिराता, तुम्हारी वही पुरानी आदतें गिराती हैं जो तुम रोज दोहराते हो बिना जाने। अगर तुम ट्रेड डालते वक्त खुद से ये नहीं पूछते कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या ये मेरा सेटअप है या मेरा इमोशन, तो सच मानो तुम मार्केट में नहीं अपनी आदतों के हाथों हार रहे हो। ब्रेट कहते हैं, inconsistent traders often lack self-awareness. They think it's the market, but it's usually themselves. अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश रावत। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही खास और जरूरी साथी है। नाम है सही। यस, सही। ये एप्लीकेशन ट्रेडर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। मोबाइल फ्रेंडली, सुपर फास्ट और परफेक्ट। और क्या चाहिए? अब सोचो, कितनी बार तुमने एक शानदार ट्रेड प्लान किया, लेकिन जब असली वक्त आया तुमने प्लान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डर आ गया, या फिर लालच भूल पड़ा, या फिर किसी और की बात सुनकर अपना भरोसा डगमगा गया। यही है वो जगह जहाँ सेल्फ अवेयरनेस काम आता है। एक अच्छा ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले खुद को स्कैन करता है। आज मेरा मूड कैसा है? क्या मैं किसी स्ट्रेस में हूँ? क्या मैं बदले की भावना से ट्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि ब्रेट ने कहा है, योर इमोशनल स्टेट बिकम्स योर ट्रेडिंग स्टेट। मतलब अगर तुम अंदर से टूटे हो तो बाहर चाहे जितनी भी स्ट्रेटजी हो, तुम फिसल ही जाओगे। इसलिए पहला प्रिंसिपल ये कहता है, चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ो। और खुद को पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रिवाज है, एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें हर ट्रेड से पहले करनी होगी। कैसे? जर्नल बनाओ, हर ट्रेड के बाद नोट करो कि उस वक्त तुमने क्या महसूस किया। अपनी हार और जीत दोनों को लिखो। कड़वा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी सच्ची मिरर होगी। ब्रेट कहते हैं, ट्रेडर्स हु जर्नल देयर थॉट्स बिकम ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स। और जो अपने पैटर्न समझ लेता है वही उन्हें तोड़ सकता है। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा सेटअप कोई चार्ट नहीं, वो आदमी है जो स्क्रीन के सामने बैठा है, तुम खुद। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो हर ट्रेड एक तुक्का होगा, और अगर तुमने खुद को समझ लिया तो हर ट्रेड एक कदम बन सकता है उस मंजिल की तरफ जिसका सपना तुमने कभी चुपचाप देखा था। ये प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है तुम्हें ट्रेडिंग से पहले खुद से दोस्ती करनी है। और जब तुम अपने मन, अपने मूड, अपने मैडनेस को समझ लेते हो, तब तुम मार्केट की आवाज सुन पाते हो बिना शोर के। क्योंकि सच्चा ट्रेडिंग एज तुम्हारी शांत सोच में छुपा होता है। और दोस्त, अगर ये बात आज दिल में बैठ गई तो तुमने ट्रेडिंग का आधा खेल अभी जीत लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल आने वाला है वो तुम्हारी आंखें बंद कर देगा लेकिन मन खोल देगा। एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर उस इंसान के लिए है जो हर रोज P&L देखकर खुद की वैल्यू मापता है। वो प्रिंसिपल तुम्हें सिखाएगा कि प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस से प्यार करना क्या होता है। इसलिए तैयार रहो, अगला प्रिंसिपल तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के दूसरे उस प्रिंसिपल की जो हजारों
ट्रेडर्स को हर रोज अंदर से तोड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली वजह समझ पाते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है प्रोसेस को अपनाओ, नतीजे नहीं, यानी मास्टर प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं when your focus is on outcomes, emotions take over. When your focus is on process, mastery begins. अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी देखा है एक दिन तुमने बढ़िया पैसा कमाया और तुम्हारा मूड सातवें आसमान पर था, फिर अगला दिन वही स्ट्रेटजी, वही सेटअप, लेकिन इस बार लॉस, और अचानक तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास हिल गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मूड, अपनी ऊर्जा, अपनी वैल्यू प्रॉफिट के आधार पर तय करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखो दोस्त, प्रॉफिट तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन प्रोसेस तुम्हारा रास्ता है, और अगर रास्ता गलत है तो मंजिल भले ही एक दिन मिल जाए, तुम उस पर टिक नहीं पाओगे। ब्रेट कहते हैं chasing profits leads to chasing trades, but mastering process leads to becoming a trader worth following. अब फर्क समझो, प्रॉफिट के पीछे भागने वाला ट्रेडर हर दिन बस एक ही सवाल पूछता है, आज कितना कमाया, जबकि प्रोसेस पर जीने वाला ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने आज अपने नियमों का पालन किया, क्या मेरी एंट्री, एग्जिट और मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे। यही है माइंडसेट का असली फर्क। ब्रेट कहते हैं your P&L tells you the result, your process tells you the truth. और जब तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो तो तुम उन सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हो जो तुम्हें बदल सकती हैं। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने प्रॉफिट किया लेकिन नियम तोड़कर, और फिर सोच लिया, देखा सही किया मैंने, लेकिन वो जीत तुम्हें सिखाती नहीं, वो तुम्हें गुमराह करती है, और फिर एक दिन वही गलती बड़े लॉस में बदल जाती है। इसलिए इस प्रिंसिपल की सबसे ताकतवर बात यह है, प्रोसेस से प्यार करो, क्योंकि वही तुम्हारी रीढ़ है। एक अच्छा ट्रेडर तब भी मुस्कुराता है जब लॉस होता है, अगर उसने नियमों का पालन किया हो, क्योंकि वो जानता है अगर मेरा प्रोसेस मजबूत रहा तो लॉस बस एक नंबर है, सीखने का मौका है। ब्रेट ने प्रोफेशनल ट्रेडर्स पर सालों काम करते हुए एक बात नोट की, द बेस्ट ट्रेडर्स आर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, दे डोंट प्ले फॉर अप्लॉज, दे प्ले फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस में डूबे होते हैं, प्रॉफिट अप्लॉज की तरह आता है, लेकिन असली संतुष्टि एग्जीक्यूशन से मिलती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग को एक कला कहा जाता है। तुम रोज अपने माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूटीन की ब्रश से एक नई पेंटिंग बना रहे हो। अगर तुम्हारी कला सिर्फ प्रॉफिट पर टिकी है तो तुम्हारा फोकस भटकेगा, लेकिन अगर वो कला प्रोसेस पर टिकी है तो तुम हर दिन आगे बढ़ोगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेड करने बैठो तो खुद से ये मत पूछो आज कितना पैसा बनेगा, बल्कि पूछो क्या मैं आज प्रोफेशनल की तरह काम कर पाऊंगा, क्या मैं आज अपने नियमों पर अडिग रह पाऊंगा। और अगर हाँ, तो चाहे ट्रेड हारे या जीते, तुम हर हाल में विजेता हो, क्योंकि तुम सिस्टम से वफादार थे, और वही वफादारी अंत में तुम्हारे खाते में करोड़ों लाएगी। याद रखो, मार्केट बदलता है, लेकिन प्रोसेस स्थिर रहना चाहिए। प्रोसेस तुम्हें उस तूफान से भी बचा सकता है जो औरों को डुबो देता है। और अब अगर तुम इस प्रिंसिपल को दिल से समझ चुके हो तो तुम एक नई स्टेज में प्रवेश कर चुके हो, जहां से लोग वापस नहीं जाते बल्कि ऊपर ही चढ़ते हैं। लेकिन अब बारी है उस तीसरे प्रिंसिपल की, जो ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन से तुम्हारा सामना, वो दुश्मन जो स्क्रीन पर नहीं दिखता लेकिन हर डिसीजन को छुपकर कंट्रोल करता है, और उसका नाम है फियर, यानी डर। प्रिंसिपल तीसरे में हम उस डर को नष्ट नहीं, समझना सीखेंगे, क्योंकि जब तक तुम डर को पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक वो तुम्हें हर बार हराता रहेगा। लेकिन अब नहीं, अगला चैप्टर खोलता है तुम्हारी सबसे छुपी हुई ताकत। तो जुड़े रहो, बिकॉज द वॉर इज नॉट विद द मार्केट, इट्स विद व्हाट लाइज विद इन। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के तीसरे प्रिंसिपल पर, और यकीन मानो, अगर इस एक प्रिंसिपल को आपने सच में महसूस कर लिया तो शायद आप उस जाल से बाहर आ सकेंगे जिसमें आज भी हजारों ट्रेडिंग अकाउंट्स उलझे पड़े हैं। प्रिंसिपल तीसरा ये कहता है, डर से भागो मत, उसे पढ़ो। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर फीडबैक। और सच भी यही है, डर एक अलार्म है लेकिन दुश्मन नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जैसे ही डर को महसूस करते हैं हम उससे नजरें फेर लेते हैं। डर ने कहा मत कर ये ट्रेड, हमने सुना। तू कमजोर है, डर ने कहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमने माना। मेरे अंदर हिम्मत नहीं। लेकिन दोस्तों, डर की भाषा डरावनी नहीं होती, वो गहरी होती है। ब्रेट ने कहा है, every emotional reaction is a message from your brain. Fear often highlights risk you haven't prepared for. अब सोचो, डर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये पूछने की जरूरत है, क्या मैंने इस ट्रेंडिंग प्लान को पूरी क्लैरिटी से बनाया था? क्या मैं किसी पुराने लॉस का बैगेज लेकर बैठा हूँ? क्या मेरा साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है? डर कभी झूठ नहीं बोलता, हम ही उसका मतलब। यार अभी तो नेक्स्ट वीडियो ले लो यार, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। टेलीग्राम पे एक रैंडम टिप देखकर कोई पैसे लगाए उस हम ही उसका मतलब गलत समझते हैं, और यही जगह है जहां एक नया ट्रेडर और एक सच्चा ट्रेडर अलग हो जाते हैं। नया ट्रेडर डर को दबाता है, साउंड बढ़ा देता है, आंखें बंद कर लेता है और फिर ट्रेड लेता है। सच्चा ट्रेडर उस डर को डायरी में लिखता है, उसकी वजह पूछता है और फिर तैयारी करता है, ताकि अगली बार वो डर सलाह
अब जरा खुद से पूछो, क्या आपने कभी गलत जगह ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि डर था कि कहीं मौका छूट ना जाए? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर नहीं, ये लत है वैलिडेशन की, दूसरों से तुलना की। और जब ये डर डिसीजन बनाने लगता है तो ट्रेडिंग नहीं, जुआ शुरू हो जाता है। ब्रेड की स्टडीज ये कहती हैं कि इमोशनल हाईजैक हैपेंस व्हेन फियर और ग्रीड डोमिनेट्स योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इन दैट स्टेट लॉजिक टेक्स अ बैकसीट। मतलब जब डर तुम पर हावी हो जाए तब तुम्हारी सबसे जरूरी ताकत यानी सोचने की शक्ति पीछे हट जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हम सिस्टम तोड़ते हैं, स्ट्रेटेजी फेंकते हैं और लॉस के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए प्रिंसिपल तीसरा कहता है, डर को डायलॉग बनाओ, डिक्टेटर नहीं। डर से भागना नहीं है, बैठकर उससे बात करनी है। पूछो उससे क्यों आया है। अगर वो कहे क्योंकि तू तैयार नहीं है तो तैयारी करो। अगर कहे क्योंकि पिछली बार तूने नियम तोड़ा था तो अब नियम से चिपक जाओ। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा टीचर है। और अगर तुमने डर को समझ लिया तो समझो मार्केट का सबसे बड़ा राक्षस तुम्हारा दोस्त बन गया। और जो डर से दोस्ती कर लेता है उसे कोई भी लालच, कोई भी घाटा हिला नहीं सकता। ब्रेट ने लिखा है, सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स फियर इनटू फोरसाइट। यानी डर अगर पहचान लिया जाए तो वो हमें गिराने वाला नहीं, हमें बचाने वाला बन जाता है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो उससे सवाल करो, क्या ये डर मेरे अंदर से आ रहा है या किसी बाहरी शोर से? क्या मैं लॉस से डर रहा हूँ या अपनी रेपुटेशन से? जब जवाब मिलेगा तो क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी ही वो रोशनी है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। और अब अगर तुमने आज ये प्रिंसिपल दिल में उतार लिया तो अगले लॉस में डर तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, वो तुम्हारा सिग्नल बनेगा। और यही फर्क है एक घबराए हुए ट्रेडर और एक शांति से जीतने वाले मास्टर में। लेकिन अब जो चौथा प्रिंसिपल आने वाला है वो डर से भी आगे है, क्योंकि वो बात करेगा तुम्हारे उस टीचर की जिसे हर कोई घाटा यानी लॉस कहता है। ये प्रिंसिपल दिखाएगा कि घाटा कोई सजा नहीं, वो एक सीख है जो करोड़ों की वैल्यू रखती है। प्रिंसिपल चौथा तुम्हारी परिभाषा ही बदल देगा, हार की, मार्केट की और खुद की भी। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अब हम घुटने टेकने नहीं, घाटे से जीतने की कला सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात उस शब्द की जिससे हर ट्रेडर डरता है, जिससे हर ट्रेडर भागता है और जिससे हर ट्रेडर एक ना एक दिन टकराता जरूर है, लॉस यानी घाटा। लेकिन ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, ए लॉस इज ओनली अ फेलियर व्हेन नथिंग इज लर्न्ड फ्रॉम इट। यानी घाटा कभी असली हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब तुमने उस घाटे से कुछ सीखा नहीं। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने लॉस होते ही खुद को कोसना शुरू कर दिया? मैं बेवकूफ हूँ, मैं कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, या फिर वो मार्केट ही गलत है, सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने उस लॉस के पीछे की कहानी पढ़ी थी? क्या आपकी एंट्री सही थी? क्या आपने स्टॉप लॉस प्लान किया था? क्या आपने बिना सोच के ओवर ट्रेड किया था? देखो, लॉस दो किस्म के होते हैं। एजुकेटेड लॉस, जहां आप सिस्टम फॉलो करते हुए भी हारे। इमोशनल लॉस, जहां आपने गुस्से, डर या लालच में नियम तोड़े। ब्रेड कहते हैं, गुड लॉसेस आर ट्यूशन फीस ऑफ ट्रेडिंग, बैड लॉसेस आर इंटरेस्ट ऑन ईगो। यानी एक अच्छा लॉस तुम्हें कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन एक बुरा लॉस सिर्फ तुम्हारे अहंकार का ब्याज होता है। अब सोचिए, अगर आप हर लॉस के बाद बैठें और 5 बिंदु लिखें कि क्या सही हुआ, क्या गलत, तो 30 दिन बाद आपके पास वो मैनुअल होगा जो शायद कोई कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। ब्रेट स्टीनबार्गर ने एक रिसर्च में बताया था, टॉप ट्रेडर्स जर्नल देयर लॉसेस मोर रिलीजियसली देन देयर विंस। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं प्रॉफिट सिर्फ नंबर है, लेकिन लॉस एक टीचर है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर लॉस तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दिखाता है और तुम्हें अपग्रेड होने का मौका देता है। लेकिन अगर तुम ईगो से भर गए तो हर लॉस तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाएगा। यही आता है असली मोड़, क्योंकि लॉस तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें निखारने आता है। ब्रेड कहते हैं, इफ यू कैन एम्ब्रेस लॉस एज अ नेसेसरी कंपेनियन, यू कैन डिसआर्म इट्स इमोशनल इंपैक्ट। यानी अगर तुम लॉस को दुश्मन मानना छोड़ दो तो उसका डर भी तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। अब सोचो, क्या होगा अगर अगली बार लॉस होते ही तुम मुस्कुराओ और कहो, शुक्रिया, अब मैं और बेहतर बनूंगा। यकीन मानो, उस दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग में ग्रोथ 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि अब तुम हार से नहीं डरते, तुम हार से सीखते हो। और यही है प्रो ट्रेडर माइंडसेट। जब कोई बड़ा ट्रेडर लॉस करता है, वो सिस्टम बदलने नहीं दौड़ता, वो अपने माइंड को स्कैन करता है। क्या मैं थका हुआ था? क्या मेरा फोकस सही था? क्या मैं किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस के प्रभाव में था? क्योंकि ब्रेड कहते हैं, योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम योर लाइफ परफॉर्मेंस। तुम जैसे इंसान हो वैसे ही ट्रेडर भी हो। इसलिए लॉस सिर्फ मार्केट की कहानी नहीं, तुम्हारी भी कहानी है। और अगर तुम ईमानदारी से लॉस की डायरी लिखते जाओ तो वो डायरी एक दिन सक्सेस मैनुअल बन जाएगी। और अब अगर तुम इस प्रिंसिपल को समझ गए तो अब तुम न सिर्फ लॉस को झेल सकोगे, बल्कि उसे सीख कर हर लॉस को फ्यूल में बदल दोगे। लेकिन अब जो प्रिंसिपल 5वां आने वाला है वो ट्रेडिंग के उस राज से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ते हैं जब वो बहुत करीब होते हैं मंजिल के। प्रिंसिपल 5वां हमें ये बताता है, कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट तुम्हारे बड़े ट्रेड नहीं
हाथों पर करोड़ों देता है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला प्रिंसिपल सीधा तुम्हारे डिसिप्लिन मसल पर वार करने वाला है, और ये वही मसल है जो ज्यादातर लोग ट्रेंडिंग की दौड़ में अंडररेट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस राज की जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी सारे प्रिंसिपल्स अपने आप काम करने लगेंगे। प्रिंसिपल 5वां कहता है कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, रोज काम करो, अच्छा काम करो, बस हो गया। लेकिन ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट डूइंग द सेम थिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस। यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने माइंडसेट और प्रोसेस को स्टेबल रखना। सोचिए, जब मार्केट में हंगामा मचा हो, ट्विटर पर हर कोई कुछ और कह रहा हो, एक जगह गोल्ड भाग रहा हो, दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, ऐसे में आप शांत रह पाएंगे? क्या आप अपने सेटअप, अपने नियम, अपने रूल्स को पकड़कर ट्रेड कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप कंसिस्टेंट हो, और अगर नहीं, तो आज का प्रिंसिपल आपके लिए जिंदगी बदल सकता है। ब्रेड का मानना है कि कंसिस्टेंसी इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट, एंड हैबिट्स आर बिल्ट इन साइलेंस, नॉट इन हाइप। यानी प्रॉफिट सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं, आपकी आदतों से आता है। अब सोचिए, क्या आप हर ट्रेड के बाद उसकी रिव्यू करते हैं? क्या आपके पास कोई रूटीन है सुबह की तैयारी का? क्या आप हर दिन एक जैसा माइंड लेकर ट्रेडिंग करते हैं, या हर बार नया डर और लालच लेकर आते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा माइंड, एक जैसी तैयारी, एक जैसी प्रतिबद्धता, और यही आदत एक एवरेज ट्रेडर को एलीट ट्रेडर बनाती है। स्टीनबर्गर एक जगह लिखते हैं, योर बेस्ट ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम योर बेस्ट रूटीन्स, नॉट फ्रॉम योर बेस्ट गेसेस। और सच भी यही है, कंफ्यूजन वही होता है जहाँ रूटीन नहीं होता। लेकिन जब आपको पता हो कि मैं किस समय ट्रेड करता हूँ, किस सेटअप पर करता हूँ, किस पॉइंट पर एग्जिट करता हूँ, और कितने प्रतिशत रिस्क लेता हूँ, तब कंसिस्टेंसी खुद ब खुद पैदा होती है। और याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर आप हर दिन कंसिस्टेंसी से चलोगे तो महीने के आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो आपके सारे डाउट खत्म कर देगा। ब्रेड कहते हैं द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु मेक द बिगेस्ट ट्रेड्स, बट दोज हु मेक द सेम बेस्ट ट्रेड्स अगेन एंड अगेन। यानी जो लोग बार बार वही सही काम करते हैं, वही कंपाउंड करते हैं अपने प्रॉफिट को। और यही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। रोज चार्ट देखना, रोज वही सेटअप्स फॉलो करना, रोज लॉग बुक भरना, वो जोश नहीं रहता जो नए ट्रेड में होता है। लेकिन दोस्तों, यही बोरिंग काम जब आप रोज करते हो, तब मार्केट आपको एक्साइटिंग प्रॉफिट देना शुरू करता है। ब्रेट स्टीनबर्गर का एक पावरफुल कोट है, रेपिटेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन बिल्ड्स वेल्थ। यानी दोस्तों, कंसिस्टेंसी से आता है विश्वास, विश्वास से आता है नियम पालन, और नियम पालन से आता है असली पैसा। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली और उसे रोज नियम से बिना उधेड़-बुन के किया? एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, तो सोचिए आपने क्या पाया होगा? आपने कमाई नहीं की, आपने खुद को मास्टर बना लिया। और यही वो ट्रेडर है जिसे मार्केट खुद रिवॉर्ड करता है। लेकिन अभी रुकिए, प्रिंसिपल छठा जो आने वाला है वो आपके माइंड और मार्केट के बीच की सबसे बड़ी खाई को पाटने वाला है। क्योंकि अब बारी है उस इनर डायलॉग की जिसे आप हर ट्रेड से पहले खुद से कहते हैं, कभी डाउट में, कभी गुस्से में, कभी होप में। प्रिंसिपल छठा है, सेल्फ टॉक ही सेल्फ ट्रेडिंग है। यानी आप बाहर कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। और अगला अध्याय इसी माइंड गेम का असली पासवर्ड खोलने वाला है। जुड़िए, क्योंकि अब हम सेल्फ मास्टरी की असली गहराई में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे लॉस को गले लगाना है, कैसे कंसिस्टेंसी से मार्केट को जीतना है। लेकिन अब बारी है उस अदृश्य ताकत की जिसे ना चार्ट पर देखा जा सकता है, ना किसी इंडिकेटर से मापा जा सकता है, लेकिन वो ताकत आपके हर ट्रेड पर राज करती है, और वो है आपकी अपनी सेल्फ टॉक। ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, we don't trade the markets, we trade our beliefs, emotions and perceptions about the markets। यानी हम मार्केट को नहीं, अपने माइंडसेट को ट्रेड कर रहे होते हैं। अब सोचिए, ट्रेड से पहले आप खुद से क्या कहते हो? इस बार बड़ा पैसा बना लूंगा, उम्मीद है ये ब्रेकआउट सही होगा, पिछली बार लॉस हुआ, इस बार सब कुछ डाउन पर है। अगर ये आपकी सेल्फ टॉक है तो माफ कीजिए, आप अभी तक मार्केट को नहीं, इमोशंस को ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेट लिखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यानी जब तक आप ये नहीं जानते कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं, तब तक आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सच है, कभी आपने गौर किया है, जब आप ओवर ट्रेड करते हैं या रिवेंज ट्रेड लेते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ लालच नहीं होता है एक डायलॉग, अब की बार रिकवरी करनी ही है। और यही डायलॉग आपको लॉस के दलदल में ले जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी सेल्फ टॉक कुछ ऐसी हो, मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, हर ट्रेड एक नया अवसर है, पुरानी गलती नहीं। अगर ये लॉस हुआ तो ये सीख बनकर जाएगा, डर नहीं। अब आपका मन शांत होगा, अब आप वही बन रहे हो जो मार्केट चाहता है, एक शांत, जागरूक डिसीजन मेकर। ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल मार्केट्स, यू कैन ओनली
only control your preparation, your process and your psychology. और psychology की जड़ है self talk. अगर आप हर सुबह ट्रेडिंग से पहले खुद से कहें मैं आज कंट्रोल में हूँ, मैं सेटअप से ट्रेड करूंगा, फीलिंग से नहीं, मैं डिसिप्लिन से जीतूंगा, प्रेडिक्शन से नहीं, तो आपका दिमाग स्टेबल होगा। अब ना डर आपको हिला पाएगा, ना लालच आपको डगमगाएगा। एक रिसर्च में ब्रेट ने बताया टॉप ट्रेडर्स लिटरली ट्रेन देयर इंटरनल डायलॉग लाइक एथलीट्स ट्रेन मसल्स। यानी जैसे एक एथलीट हर रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने माइंड को रोज ट्यून करना पड़ता है। और वो ट्रेनिंग होती है पॉजिटिव, रैशनल, प्रोसेस बेस्ड सेल्फ टॉक। अगर आप हर लॉस के बाद खुद से कह सकते हो ये नुकसान टेम्पररी है, मेरा डिसिप्लिन परमानेंट है, तो यकीन मानिए आप असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर हैं। क्योंकि असली माइंडसेट वही है जो खुद से सवाल करता है, जवाब भी ढूंढता है और अगले ट्रेड में खुद को बेटर बनाकर लाता है। अब ये पूछिए खुद से, क्या आपकी सेल्फ टॉक आपको ऊपर खींच रही है या धीरे धीरे तोड़ रही है अंदर से? क्योंकि जिस दिन आपने अपने अंदर की आवाज को साफ और शक्तिशाली बना लिया, उस दिन आप बाहरी नॉइज से कभी नहीं डरेंगे। और यही वो दिन होगा जब आपका हर ट्रेड एक पर्पस से, एक प्लान से और एक पीस से होगा। और दोस्तों, प्रिंसिपल छठा यही खत्म नहीं होता, ये आगे आने वाले प्रिंसिपल की नींव रखता है। क्योंकि प्रिंसिपल सातवां वो है वो आदत जो बड़े से बड़े ट्रेडर के अकाउंट को बचाती है और छोटे से छोटे ट्रेडर को बड़ा बनाती है। प्रिंसिपल सातवां, रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजी नहीं, सर्वाइवल कोड है। और ये वो कोड है जो आप नहीं जानते तो ट्रेडिंग आपके लिए जुआ बन जाएगी। इसलिए अगली बार हम खोलेंगे उस डिसिप्लिन का रहस्य जिससे लॉस भी आप कंटेन कर सकते हैं और विन को आप सस्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल की जो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसी की अनदेखी ने लाखों ट्रेडर्स को जीरो बना दिया। और वो है रिस्क मैनेजमेंट पर ब्रेट स्टीनबार्गर हमें एक नई नजर से इसे समझाते हैं। वो कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट प्रोटेक्टिंग मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग माइंडसेट। यानी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात आपके माइंड की सुरक्षा की है। क्योंकि जब आप एक बार बड़ा नुकसान झेलते हैं तो सिर्फ अकाउंट नहीं टूटता, आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी भी बिखर जाती है। ब्रेट का साफ कहना है great traders don't survive because they make big gains, they survive because they don't make big losses। यानी रिस्क मैनेजमेंट बराबर सर्वाइवल मैनेजमेंट। अब सोचिए, आप दिन में 3 ट्रेडिंग सेटअप पकड़ते हैं, 2 में प्रॉफिट, 1 में लॉस, लेकिन आपने उस लॉस वाले ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी ले ली, नतीजा पूरे दिन की कमाई उड़ गई। तो दोष मार्केट का नहीं था, दोष रिस्क की लिमिट न तय करने का था। ब्रेट कहते हैं एवरी ट्रेड शुड बी साइज्ड इन अ वे दैट अ लॉस वोंट हर्ट योर माइंडसेट। यानी आपका रिस्क इतना होना चाहिए कि अगर वो लॉस में भी जाए तो आपकी साइकोलॉजी अगले ट्रेड के लिए डगमगाए नहीं। अब यहाँ एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं रिस्क को डिफाइन करता हूँ या सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड करता हूँ? अगर आपने एंट्री से पहले कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा कहाँ होगा, रिस्क कितना प्रतिशत है, कितना लॉस मैं इमोशनली अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, तो आप अभी भी होप ट्रेडर हो और प्रोफेशनल नहीं। ब्रेट स्टीनबार्गर का एक जबरदस्त नियम है, ट्रेड स्मॉल, ट्रेड स्मार्ट और लास्ट लॉन्ग एनफ टू लर्न हाउ टू विन। यानी शुरुआती दिनों में आप जीतने नहीं, बचने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट सिखाता है, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको सबसे पहले जिंदा रहना होगा। यही कारण है कि कुछ ट्रेडर्स हर महीने थोड़ा कमाते हैं लेकिन टिके रहते हैं और कुछ लोग हफ्ते भर में सब हार जाते हैं। फर्क रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको 3 गोल्डन रूल याद रखने। Trade smarter with one. Set alerts for heavy losses. Keep your trades in check. Share P&L with your mentor. रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1, एक ट्रेड में छोटा रिस्क लो, अपने पूरे पैसों में से सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर लगाओ, उससे ज्यादा कभी नहीं। रूल नंबर 2, पहले से सोचो कहाँ निकलोगे। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये तय करो कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा। यानी पहले ये सोचो कि अगर गलती हो जाए तो कहाँ कटना है, फिर ही एंट्री लो। रूल नंबर 3, फायदा हमेशा नुकसान से ज्यादा चाहिए। हर ट्रेड में कोशिश करो कि अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 2 या 3 रुपए का फायदा हो। यानी 1 का रिस्क, 2 या 3 का रिवॉर्ड। ब्रेट कहते हैं यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, यू जस्ट नीड टू लूज लेस व्हेन यू आर रॉन्ग एंड विन मोर व्हेन यू आर राइट। यानी गेम एक्यूरेसी का नहीं, बैलेंस का है। अब बात करते हैं उस इमोशनल ट्रैप की, रिकवरी ट्रेडिंग। यानी आपने लॉस किया और अब आप क्वांटिटी डबल करके अगले ट्रेड में कूद जाते हैं, ये सोचकर अब तो वापसी करनी ही है। लेकिन ये वही मोड़ है जहाँ रिस्क मैनेजमेंट मर जाता है और गैम्बलिंग शुरू हो जाती है। ब्रेट इसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। वो कहते हैं मैनेजिंग रिस्क इज नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट मेंटेनिंग अ स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड सो यू कैन कीप ट्रेडिंग इंटेलिजेंटली। यानी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप गेम में लंबे समय तक टिकने का प्लान बना रहे हो। और वही प्लेयर जीतता है जो मैदान में देर तक टिके रहता है, चाहे बैटिंग धीमी हो पर विकेट ना गिरे। ट्रेडिंग में भी यही सच है। बड़ा पैसा तब बनता है जब आप कंपाउंड करते हैं और कंपाउंड तभी होता है जब लॉस कंट्रोल में हो। इसलिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी ना समझो, इसे अपनी जान की सुरक्षा समझो। ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं इफ यू वांट टू बी
अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है जो अगले प्रिंसिपल में आने वाला है। प्रिंसिपल 8वां, पेशेंस इक्वल्स हिडन प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट जितना आपको एक्शन से नहीं उतना ही आपको इंतजार से रिवॉर्ड करता है। अगली बार हम जानेंगे उस इंतजार की ताकत जो लाखों में एक ट्रेडर को करोड़ों का विजेता बनाती है। तो दोस्तों, आपने शायद ये सुना होगा, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग एंड 10% एक्शन। लेकिन असल में ये सिर्फ कहावत नहीं, सच है। और ब्रेड एंड स्टीन बार्गर बार बार यही बताते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु डू मोर बट दोज हु वेट मोर एंड एक्ट प्रिसाइसली। सोचिए, मार्केट रोज चलता है, लेकिन क्या हर दिन ट्रेंड बनता है? नहीं। क्या हर ब्रेकआउट सही होता है? नहीं। लेकिन हम फिर भी रोज एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है। ब्रेड लिखते हैं, impatience is the tax traders pay for overconfidence, यानी जितना आप उतावले होते हैं उतना ही मार्केट आपसे टैक्स ले लेता है लॉसेस के रूप में। अब ध्यान से सुनिए, जब कोई ट्रेंड नहीं है, जब कोई क्लियर सेटअप नहीं है, जब आपका मन बेचैन है, तब ट्रेड करना मतलब लॉस को इनवाइट करना है। ब्रेड कहते हैं, some of the most profitable trades are the ones you don't take। सोचिए कितनी बार आपने FOMO में आकर एक अजीब सा ट्रेड ले लिया और फिर पछताए। अब पूछिए खुद से, क्या मेरी वॉच लिस्ट में क्वालिटी है या क्वांटिटी? क्या मैं ट्रेड लेने से पहले शांत बैठ सकता हूँ? क्या मैं मार्केट के बुलाने तक इंतजार कर सकता हूँ? यही क्वेश्चंस आपको पेशेंस की पावर समझाते हैं। ब्रेड स्टीनबार्गर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बताते हैं जिसे वो कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमने एक अच्छा ट्रेड मिस कर दिया तो कुछ बड़ा मिस हो गया, और इसी डर में हम ट्रेड कर बैठते हैं बिना सेटअप, बिना सिस्टम, सिर्फ इमोशन से। लेकिन ब्रेड कहते हैं मार्केट्स रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट डेस्परेशन। अगर आपने हर बार एंट्री से पहले खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछे, क्या ये मेरे सिस्टम के अनुसार ट्रेड है? क्या मैं पूरी तरह शांत और संतुलित हूँ? क्या मैं इसे मिस होने दूंगा अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा? तो आप एक अलग ट्रेडर बनने लगते हैं। ब्रेड कहते हैं पेशेंस नॉन पासिव, इट्स पावरफुल रेस्टोरेंट, यानी धैर्य का मतलब सुस्त बैठना नहीं है, इसका मतलब है तैयार रहना, लेकिन तभी वॉर करना जब समय सही हो। याद रखिए, हर बड़ा ट्रेडर, चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो, पॉल ट्यूडर जोन्स या ब्रेड स्टीनबार्गर, सभी ने एक बात कही है, वी वेट फॉर द पिच वी कैन हिट हार्ड एंड इग्नोर द रेस्ट। मार्केट रोज मौके देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही गोल्ड माइंस होते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप उन असली मौकों से पहले थक जाएंगे या लुट जाएंगे, और यही आता है असली सबक। पेशेंस केवल प्रॉफिट के लिए नहीं होता, पेशेंस आपकी मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग हर मोमेंट ट्रेडिंग में दौड़ रहा है तो थकावट आपको गलती करवाएगी, और यही ब्रेड समझाते हैं। पेशेंस बिल्ड्स क्लैरिटी, क्लैरिटी लीड्स टू प्रिसिजन, प्रिसिजन क्रिएट्स प्रॉफिट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कभी-कभी एक हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड ही काफी होता है, अगर वो हाई क्वालिटी वाला हो, और वो क्वालिटी आती है वेटिंग से। इसलिए ब्रेड का ये जबरदस्त मंत्र याद रखिए, ट्रेड व्हेन यू हैव एज, वेट व्हेन यू हैव डाउट। अब सोचिए, अगर आप बस ये प्रिंसिपल अपनाएं तो कितने लॉस आप अवॉइड कर सकते हैं, और वही अवॉइडेड लॉसेस जान हिडन प्रॉफिट्स। क्योंकि पैसा कमाना ही प्रॉफिट नहीं है, पैसा बचाना भी एक प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को लाने वाला हिडन हीरो है पेशेंस। लेकिन दोस्तों, पेशेंस अकेले चलता नहीं, उसे चाहिए एक और चीज, और वो है जर्नल। यानी अगला प्रिंसिपल खोलता है वो दरवाजा जहां से आपकी ग्रोथ को मैप किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप रिपीट कर रहे हो वही पुरानी गलती। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे ट्रेड किए होंगे, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, लेकिन अब एक सवाल पूछो खुद से, क्या मुझे सच में पता है कि मैं किस वजह से हारता या जीतता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आप बिना नक्शे के जंगल में चल रहे हो। ब्रेड स्टीनबार्गर कहते हैं, द जर्नल इज नॉट अ डायरी, इट्स अ मिरर। यानी जर्नल एक ऐसी शीशा है जो आपको वो दिखाता है जो आप खुद से छिपा रहे थे। आपकी आदतें, आपकी गलतियां, आपका माइंडसेट और आपका एज, सब कुछ उस पन्ने पर सामने आता है, अगर आप ईमानदारी से लिखें। ब्रेड साफ कहते हैं, इफ यू आर नॉट जर्नलिंग योर ट्रेडिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर जस्ट गैम्बलिंग विद मोर इन्फॉर्मेशन। अब सुनिए, जर्नल सिर्फ ये लिखने का नाम नहीं कि बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ब्रेड एक स्ट्रक्चर तरीका बताते हैं, और वो है, आप सब जगह ट्रेडिंग के फीचर ढूंढ रहे हो, और सारे टूल्स आपका यहाँ टोटल नहीं होकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे और वो है 3-part जर्नल मेथड। पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या हुआ। पार्ट 2 इमोशन, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, क्या डर, लालच या जल्दबाजी थी, क्या आप शांत थे या गुस्से में। पार्ट 3 रिफ्लेक्शन, क्या सही किया, क्या गलती थी, क्या दोबारा होगा, क्या सुधार कर सकते हो। ब्रेड कहते हैं, ग्रोथ इन ट्रेडिंग इज नॉट फ्रॉम रीडिंग मोर बुक्स बट फ्रॉम रिव्यूइंग योर ओन बिहेवियर। यानी आपके अंदर सारी नॉलेज है, आपको बस उसे ट्यून करना है। अब सोचिए, जब आप हर हफ्ते अपना जर्नल देखोगे तो आपको ये पैटर्न्स दिखने लगेंगे। कब आप बार जल्दी एंट्री कर रहे हो, किस समय आप ओवर ट्रेड करते हो, कौन से सेटअप आपके लिए काम कर रहे हैं, किन
इमोशन की वजह से नुकसान हो रहा है। ये डेटा यही असली टीचर है। ब्रेड, इसे योर पर्सनल ट्रेडिंग एल्गोरिदम कहते हैं। यानी हर ट्रेडर को खुद को कोड करना होता है और वो कोडिंग होती है जर्नल से। अब एक सच्ची बात, बहुत से ट्रेडर जर्नल नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें खुद से ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेड कहते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर द मोस्ट सेल्फ अवेयर, और सेल्फ अवेयरनेस आती है ऑब्जर्वेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन से। यानी लिखो, सोचो, दोहराओ और हर हफ्ते 1% बेहतर बनो। ब्रेड एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर ब्लूप्रिंट टू वेल्थ। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सक्सेस की ब्लूप्रिंट बना रहे हो या अभी भी सिर्फ चार्ट्स देख रहे हो और खुद की साइकोलॉजी को अनदेखा कर रहे हो? याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाता है, पेशेंस आपको मौका देता है, लेकिन जर्नलिंग आपको एक प्रोफेशनल बनाता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो खुद को रोज एनालाइज करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अब जब आप जर्नल बना रहे हैं, अब आप तैयार हो अगले प्रिंसिपल के लिए, जो शायद सबसे कम बोला जाता है लेकिन सबसे बड़ा फर्क वही लाता है, वो है सेल्फ मास्टरी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दरवाजे पर जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। शायद आपने सोचा होगा कि ट्रेडिंग चार्ट से शुरू होती है या पैसे से या किसी नई स्ट्रेटेजी से, लेकिन नहीं, असल ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जहां इंसान खुद को देखना शुरू करता है। ये आखिरी प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि हम मार्केट को नहीं, असल में खुद को ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्रेट स्टील बार्गर कहते हैं, मार्केट्स डोंट डिफीट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स डिफीट देमसेल्व्स। और जब मैं ये लाइन सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लाइन सिर्फ सच नहीं है, ये एक आईना है। आईना जो हमें वो दिखाता है जिससे हम अक्सर भागते हैं, अपनी खुद की साइकोलॉजी से, अपने ही इमोशन से, अपने ही डिसीजन से। कई लोग दिन रात ट्रेड करते हैं, सिस्टम बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, ब्रोकर बदलते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। वो ये नहीं समझते कि जब तक इंसान खुद को नहीं जीतता, वो किसी भी मार्केट में नहीं जीत सकता। सेल्फ मास्टरी, ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। ये वही जगह है जहां आप ट्रेडिंग को एक गेम नहीं, एक साधना समझना शुरू करते हैं, जहां आप अपनी हार के लिए मार्केट को दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं लालच में था? क्या मैंने जल्दीबाजी की? क्या मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया? और जब आप इन सवालों से भागना बंद करते हैं, तब शुरू होती है असली जर्नी। ब्रेट कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द स्मार्टेस्ट, दे आर द मोस्ट सेल्फ अवेयर। अब सोचिए, हर बार जब आपने लॉस किया, क्या वो लॉस एक स्ट्रेटेजी की वजह से था या आपकी जल्दबाजी, डर या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? जब तक आप खुद को टटोलना नहीं सीखते, आपको हर बार नया बहाना चाहिए होगा। मार्केट गलत था, न्यूज आ गई, ब्रोकरेज स्लो था, लेकिन ब्रेट कहते हैं ये सब बहाने हैं, और बहाने बनाने वाला कभी प्रोफेशनल नहीं बनता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो लॉस के बाद खुद से पूछे, मैंने क्या सीखा? जो प्रॉफिट के बाद भी घमंड नहीं करता, बल्कि देखता है कहीं ये किस्मत तो नहीं थी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कैरेक्टर की परीक्षा है, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई टाइमर नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ आप हो और आपकी सोच। और यही इस गेम को सबसे मुश्किल बनाता है और सबसे खूबसूरत भी। ब्रेट लिखते हैं, सेल्फ मास्टरी इज इन द एंड ऑफ ट्रेडिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ रियल मास्टरी। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो हर लॉस आपको गिराता नहीं, संवारता है। हर दिन आप बेहतर फैसले लेते हो, हर ट्रेड के बाद सोचते हो, और हर हफ्ते खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। तभी तो कहते हैं, जो इंसान खुद से जीत गया, उससे मार्केट भी हार जाता है। तो ये मत समझो कि आपने सिर्फ 10 बातें सीखी हैं, आपने सीखा है वो सोच जो एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बनाती है। और अगर आपने दिल से सुना, तो अब आप सिर्फ मार्केट नहीं, खुद को ट्रेड करना जानते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं है, वो है खुद पर जीत, सेल्फ मास्टरी। तो दोस्तों, ये थे द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के वो सीक्रेट प्रिंसिपल जो अगर आपने सही तरीके से अपनाए, तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाएगी, खुद को हर दिन बेहतर बनाने की। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का रास्ता चार्ट से होकर नहीं, आपकी सोच से होकर जाता है। इन प्रिंसिपल्स को अगर आपने सच में सीरियसली लिया, तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, एक प्रो ट्रेडर की सोच, धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास भी मिलेगा। हर वो इंसान जो ये सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए ये प्रिंसिपल सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मार्गदर्शन है। और अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कुछ सिखाया, कुछ हिला दिया अंदर से, तो यार एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में सीरियस है, और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल और रियल ट्रेडिंग माइंडसेट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे वो बातें जो शायद ही कोई ट्रेडर आज की दुनिया में आपसे सच्चाई से कहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम मिलकर बनेंगे एक स्मार्टर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर ट्रेडर। टिल देन, ट्रेड विद डिसिप्लिन, लिव विद पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दोस्तों, हर ट्रेडर की शुरुआत एक सपने से होती है। कोई कहता है मैं भी लाखों कमाऊंगा, कोई सोचता है बस एक सही ट्रेड मार दूं, जिंदगी बदल जाएगी। कोई अपने मन में महल, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल बना चुका होता है, लेकिन हकीकत इतनी कड़वी है कि सुनकर ही दिल कांप जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग का सच ये है कि आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप खुद को खोने लगते हो। आप हर सुबह चार्ट खोलते हो उम्मीदों से भरे, लेकिन शाम होते होते आपकी स्क्रीन लाल होती है, आपका अकाउंट खाली होता है और आपका दिल टूटा हुआ होता है। सबसे बड़ा सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ आपके पैसों की नहीं, आपके इमोशंस की परीक्षा लेती है। यहाँ हर हार, हर लॉस आपको अंदर तक हिला देता है। नींद गायब हो जाती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे आप सोचने लगते हो क्या मैं वाकई इस खेल के लिए बना हूँ। लेकिन दोस्तों, यही तो डार्क रियलिटी है। ट्रेडिंग बाहर से चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से ये आपकी सोच, आपका धैर्य, आपकी हिम्मत सब कुछ निकल जाती है। अब सवाल ये है, क्या इस डार्कनेस में भी कोई रोशनी है? क्या इस खून चूसने वाले खेल से सच में जीत कर निकला जा सकता है, या फिर ये बस एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर कोई टूट कर गिरता है? यही काला सच हम आगे खोलेंगे। वो बातें जो किसी किताब में साफ साफ नहीं लिखी जाती, वो दर्द जो हर ट्रेडर के दिल में है लेकिन कोई जाहिर नहीं करता। तो जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो सिर्फ जानकारी नहीं होगी, वो आपकी कहानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग की असली डार्क रियलिटी क्या है। हर इंसान सोचता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल है, पैसे डालो, पैसे बनाओ। लेकिन सच्चाई, ट्रेडिंग पैसे से ज्यादा आपकी जिंदगी, आपके इमोशंस और आपके दिमाग को खाती है। सोचो, जब आप पहली बार मार्केट में आते हो तो दिमाग में बस सपने होते हैं, करोड़ों कमाने के, लग्जरी कार के, बड़ा बंगला बनाने के। आप सोचते हो मैं तो मार्केट को हरा दूंगा, मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। लेकिन जैसे ही पहला बड़ा लॉस आता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। अकाउंट का बैलेंस कम होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हो, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? और यहीं से खेल शुरू होता है। ट्रेडिंग का असली जहर यही है, ये धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ता है। पैसा तो आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन जब दिमाग हार मान लेता है, जब दिल कहता है तू लूजर है, तब सबसे बड़ा नुकसान होता है। कितने लोग हैं जो लॉस झेलकर सिर्फ अकाउंट ही नहीं, खुद को भी खाली कर बैठते हैं। नींद उड़ जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हर सुबह आईने में चेहरा देखकर लगता है कि शायद मैं फेल हूँ। यही है ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी। ये खेल आपके दिमाग से खेलता है। अब जरा सोचो, जब एक ट्रेडर लॉस झेलता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं खोता, वो अपनी हिम्मत खोता है, अपनी उम्मीद खोता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मार्केट तो न्यूट्रल है, उसे आपके सपनों, आपके संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप अपने हर लॉस को अपनी काबिलियत का सबूत मानने लगते हो और यहीं से गिरावट शुरू होती है। ये खेल इतना खतरनाक है कि धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। पहले आप मार्केट में आते हो सपनों के साथ, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद से नफरत करने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद मैं ही बेवकूफ हूँ। निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, यही पर एक सवाल उठता है, क्या सच में हर लॉस आपकी नाकामी है? क्या हर हार ये साबित करती है कि आप फेल हो, या फिर ये सिर्फ खेल का हिस्सा है? क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग एक ऐसा आईना है जो आपको आपके असली चेहरे से मिलवाता है। जब आप जीतते हो तो आपका एग्जामिनेशन आसान है, लेकिन जब आप हारते हो तब असली टेस्ट शुरू होता है। तब असली ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क दिखाई देता है, क्योंकि असली खेल लॉस झेलने का नहीं है, बल्कि उसे समझने का है। और यही राज अगली डार्क रियलिटी में छिपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली सच्चाई आपको वो दिखाएगी जो शायद आप कभी देखना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, पिछले बार हमने जाना कि ट्रेडिंग की पहली डार्क रियलिटी ये है कि मार्केट सिर्फ आपके पैसों को नहीं, बल्कि आपके दिमाग, इमोशंस और आत्मसम्मान को निकलता है। अकाउंट का बैलेंस गिरता है तो दर्द होता है, लेकिन असली चोट तब लगती है जब आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब डार्क रियलिटी दूसरे में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग का असली जाल क्या है। वो जाल जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो। और यकीन मानो दोस्तों, ये जाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, जब एक इंसान लॉस झेलता है, उसके अंदर एक आग चलती है, ये पैसा मुझे वापस चाहिए। और जब वो प्रॉफिट करता है, तभी एक और आग चलती है, अभी तो और कमा सकता हूँ। यानी चाहे जीत हो या हार, दोनों ही हालात में ट्रेडर मार्केट छोड़ना नहीं चाहता। यही है मार्केट का जाल। मार्केट आपको हमेशा एक और ट्रेड करने के लिए उकसाता है, और यही जाल है ओवर ट्रेडिंग का। सोचो जरा, एक बार आप जुआ खेलते हो, थोड़ा जीत जाते हो तो अंदर से आवाज आती है, चलो और लगाते हैं। और जब हार जाते हो तो आवाज आती है, ये हाथ तो निकालनी ही है। बस यही मानसिकता धीरे धीरे ट्रेडिंग को जुए में बदल देती है। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है कि ये एक लत बन जाती है। कितने लोग हैं जिन्होंने
मैंने शुरू में कहा था, मैं डिसिप्लिन रहूंगा, रोज बस 1-2 ट्रेड करूंगा, लेकिन हकीकत सुबह मार्केट खोलने से पहले ही स्क्रीन खोल लेना, चार्ट खोलना, मौके ढूंढना और हर छोटे मोटे मूव पर ट्रेड लगा देना, ये सब धीरे धीरे आपकी आदत नहीं, आपकी आवश्यकता बन जाती है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके पैसे को नहीं खाती, बल्कि आपके सोचने की क्षमता को भी नष्ट कर देती है। आप सोचते हो कि आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असलियत में मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आप हर बार ये मानकर एंट्री लेते हो कि इस बार पक्का जीतूंगा, लेकिन हर बार हर छोटे लॉस के बाद आपकी हालत उसी इंसान जैसी हो जाती है जो कैसीनो में बार बार मशीन पर पैसे डालता रहता है, इस उम्मीद में कि अगली बार जैकपॉट लगेगा। और सबसे खतरनाक बात, आपको खुद पता भी नहीं चलता कि आप लती हो चुके हो। आप खुद को समझाते हो, नहीं ये मेरा प्रोफेशन है, मैं तो सीरियस ट्रेडर हूँ, लेकिन भीतर से आप उतने ही फंसे हुए होते हो जितना कोई जुआरी। दोस्तों, यही असली डार्क रियलिटी है। ट्रेडिंग आपको धीरे धीरे जुए की लत में धकेल देती है और आप सोचते रहते हो कि आप स्मार्ट हो, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है जिससे आप ओवर ट्रेडिंग और इस लत से खुद को बचा पाओ? क्या आप मार्केट से खेल रहे हो या मार्केट आपसे खेल रहा है? यही राज छिपा है डार्क रियलिटी तीसरे में। और दोस्तों, अगली बार जो हम जानेंगे वो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि वहां हम उस सच से मिलेंगे जिससे बचकर हर ट्रेडर भागता है, लेकिन कोई नहीं बच पाता। तो दोस्तों, पिछली बार हमने जाना कि ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल है ओवर ट्रेडिंग और लत। लोग सोचते हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मार्केट उन्हें कंट्रोल करता है। लालच और डर दोनों मिलकर इंसान को उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहां वो बार बार वही गलतियां दोहराता है। अब डार्क रियलिटी तीसरे में हम जानेंगे वो सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग पाने से डरते हैं, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये वो सच्चाई है जो हर ट्रेडर की रातों की नींद उड़ा देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग और आपकी मनोविज्ञान का खेल है। और मार्केट वो हमेशा आपसे एक कदम आगे होता है। आपको लगता है कि आपने चार्ट पढ़ लिया, पैटर्न समझ लिया, सब कुछ अब आपके कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हमेशा आपकी सोच से उल्टा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस और कैंडल से नहीं चलता, वो चलता है करोड़ों लोगों की लालच और डर से। और उस भीड़ के सामने आप अकेले कुछ नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बड़ी मेहनत से एनालिसिस किया, सही एंट्री ली, लेकिन जैसे ही आप अंदर गए, प्राइस नीचे गिर गया, आपने स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट उसी पॉइंट पर जाकर आपका स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद वही स्टॉक आसमान छू गया। उस वक्त आपके मन में क्या आता है? ये मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों चलता है? दोस्तों, यही है मार्केट की डार्क रियलिटी। What is speculation? सट्टेबाजी का अर्थ है कि भविष्य में किसी परिसंपत्ति जैसे कि शेयर, कमोडिटी, मुद्रा आदि के मूल्य में होने वाला बदलाव का अनुमान लगाकर लाभ कमाना। अनुमान मतलब प्रोबेबिलिटी लगाना। ये एक प्रकार का एक वित्तीय अनुमान होता है, फाइनेंशियल गैस वर्क होता है, जिसमें ट्रेडर या निवेशक बाजारों के रुझानों, समाचारों या अन्य कारकों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसी से तय होगा कि कोई लॉस में जाएगा तो कोई प्रॉफिट में जाएगा। तो सट्टेबाजी में मुख्य रूप से लघु अवधि शॉर्ट टर्म के लाभ पर ध्यान दिया जाता है, न कि दीर्घकालीन निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटीज वगैरह होती है उनमें। तो सट्टेबाजी और ट्रेडिंग में जो अंतर है वो है, सट्टेबाजी जो है वो है स्पेकुलेशन, उसमें उच्च जोखिम, ज्यादा जोखिम है और लाभ की संभावना भी बहुत बड़ी होती है। तो सट्टेबाज अक्सर जो है बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी शेयर को कुछ दिनों या घंटों के लिए खरीद कर बेचना, ताकि कीमतों में छोटे बदलाव से भी लाभ कमाया जा सके और मोटा मुनाफा कमाया जा सके। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी खरीद बिक्री होती है, लेकिन यह अधिक व्यवस्थित अपने आप को व्यवस्थित करती है, डिसिप्लिन्ड और तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस या मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित होती है। क्योंकि ट्रेडर लंबे समय तक पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं या अल्पकालिक ट्रेड कर सकते हैं। निवेश, अब निवेश क्या है? निवेश एक अलग दुनिया है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट आता है। निवेश में दीर्घकालीन लाभ की उम्मीद की जाती है, शॉर्ट टर्म में नहीं की जाती है। जब मार्केट सारे फ्लक्चुएशंस करके थक चुका होता है, तब जो पीछे बचता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि कंपनी के शेयरों को सालों तक रखना है, इसमें जोखिम कम होता है लेकिन लाभ भी बहुत धीरे धीरे होता है। और जो फ्यूचर ऑप्शंस होता है उसमें लाभ बहुत तेजी से होता है, तो खतरे भी उतने ही तेजी से होते हैं। तो जितना तेजी से अगर काम करना है तो उतना ही शांत रहना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। अपने मेंटल जो है
मानसिक स्थिति को भी तुम्हें सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने आसपास के वातावरण को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो तुम्हें ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए फिर। तो सट्टेबाजी के जो उदाहरण है उसमें है कि कोई ट्रेडर ये अनुमान के किसी शेयर की कुछ दिनों में बढ़ेगी, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ये आप देख सकते हो। अब इसमें है 28 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, 9 सितंबर का, 16 सितंबर का, 23 सितंबर का, 30 सितंबर का और 28 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए, अब इसमें 28 अक्टूबर तक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लिए हुए हैं। अब इनकी प्रीमियम कितनी लग रही है? एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 48,000 से ऊपर, 2 की ये गई 96,000। लेकिन इसमें बदलाव भी धीरे धीरे आता है। चलो एक बार इसका चार्ट खोल के देखते हैं हम कैसा है ये चार्ट। ये देखो, अब उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं आया है। तो कॉल साइड पे देखो, यहाँ पे सुबह था, इसकी जो कीमत थी कॉन्ट्रैक्ट की वो थी 556 रुपये। कैलकुलेटर निकालते हैं, 556 मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा 75 रुपीज। 75 का लॉट है तो 41,700 रुपया। अब मार्केट गया एक डायरेक्शन में मोटे तौर पे
बारिश हो रही है सुपर। यहाँ से अगर टूटा तो फिर नीचे जाएगा। डाउन साइड बिग मूवमेंट आया है। लगता है यहाँ से पलट जाएगा पूरा मैच। यहाँ से आउट कर सकते हैं।
वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि वो जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। भाई सुनिएगा कि देखो हम रहा बोलेंगे, जिंदगी में अगर आगे जाना है तो दूर हमें एक कहानी सुनाई जो आज तक हमें याद है, हम कभी भूले नहीं। एक गांव में मेला लगा था। उस मेले में एक बच्चा घूम रहा था। अचानक उसने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा, उसको लाल रंग का एक गुब्बारा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो बालक दौड़ता हुआ गया गुब्बारे वाले के पास, बोला हमको लाल रंग का गुब्बारा दे दो भैया। गुब्बारे वाले ने कहा, बच्चा लाल रंग का तो वो आखिरी गुब्बारा था जो उड़ गया। बच्चा सुनकर रोने लगा, बोला नहीं, हमको तो वही लाल रंग का गुब्बारा चाहिए, क्योंकि लाल रंग का गुब्बारा आसमान में उड़ता है। उस बालक की अबोध बातें सुनकर वो गुब्बारे वाला पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने एक पीले रंग का गुब्बारा निकाला, उसमें हवा भरी और आसमान में छोड़ दी। फिर उसने हरे रंग का गुब्बारा, उसमें हवा भरी, वो गुब्बारा भी आसमान में उड़ गया। फिर नीले रंग का। वो बालक हैरत से आसमान को देख रहा था कि अरे सारे गुब्बारे हवा में उड़ सकते हैं। तब उस गुब्बारे वाले ने उस बालक को ज्ञान दिया। उसने कहा, बचुआ, गुब्बारा अपने रंग से आसमान में नहीं उड़ता है, वो उड़ता है तो उस हवा की वजह से जो उसके अंदर है। मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर छात्र के सीने में वो हवा होनी चाहिए जिससे वो आसमान में उड़ सके। बोलिए, आप आसमान में उड़ेंगे? बोलिए जोर से, उड़ेंगे? हमें एक कहानी सुना। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दिल्ली के साथ, सोचिए क्या ऐसा कभी हो सकता है? आपका गाँव अब इसे करवा, ये ना किसी ने गलत ना, ये सुख चाहे इनकी बात सुख चाहने की नहीं मालूम होती, ये और नया दुख पैदा करने की होती कि मुझे सुख नहीं है। ध्यान करो इस बात पर, इस पर ठीक से नजर दो। तुम सच में सुख चाहते हो? अगर सुख चाहते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? एक क्षण को भी तुम कैसे रोके जा सकते हो? सुख तुम्हारा स्वभाव है, इधर चाहा इधर हुआ। मैं तुमसे एक अजीब सी बात कहना चाहता हूँ, सुख पाना तो बहुत सरल है, दुख पाना बहुत कठिन, क्योंकि दुख स्वभाव के विपरीत है। दुख स्वाभाविक नहीं है, इसलिए कठिन है। कठिन को तो तुमने कर लिया है, और सरल की तुम पूछते हो कैसे हो? तुमने अति कठिन को करके दिखला दिया है। आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता, वो भी तुमने बना के दिखला दिया है, उसका भी तुमने आत्मा को धोखा दे दिया है। और सुख का झरना तो बह ही रहा है भीतर। सुख को पाना नहीं होता, सिर्फ दुख को पकड़ना छोड़कर ही सुख हो जाता है। ये जो कफस है, ये जो पिंजरा है संसार का, इसने तुम्हें बंद किया है, इस ख्याल में मत पड़ना। अभी गैप बना हुआ है 24,950 तक का, वैसे प्री मार्केट ओपनिंग हुआ था, गिरेगा। सुख चाहने की नहीं मालूम होती है, और नया दुख पैदा करने की होती कि मुझे सुख नहीं है। ध्यान करो इस बात पर, गिरना तय है। इस पर ठीक से नजर दो। तुम सच में सुख चाहते हो? अगर सुख चाहते हो तो तुम्हें कौन रोक सकता है? एक क्षण को भी तुम कैसे रोके जा सकते हो? सुख तुम्हारा स्वभाव है, इधर चाहा इधर हुआ। तुमसे अजीब सी बात कहना चाहता हूँ। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not the answer to that. I didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action. It's
talk about like it's not a program decision. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? Let me ask you this. There's 24,973 नेक्स्ट फॉर्म टारगेट। वहां से गिरा है तो यहीं पढ़ना चाहिए। अब पता चला टाइम डीके यहां से यहां आ गया, लेकिन टाइम डीके देखो, एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें, छोटे छोटे लॉस में। अब यहां से ये बहुत तेजी से गिरे तो भी वो प्राइस तुम्हें नहीं मिलेगा जो वहां मिला था, वो 11 रुपए में मिलेगा तुम्हें, 97 पे आया। अब ये ब्रेक करके अगर टूटता है तो फिर तो बहुत लंबा जाएगा भाई इस पॉइंट से। अपन इस ट्रेड में तब तक गिराएंगे जब तक ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर जाता। लेकिन कल है मंगलवार, तो हम इस ट्रेड में रुकेंगे, फिर टाइम लेके जो भी हो देखा जाएगा। वीकली पोजीशंस भी तो समझनी पड़ेगी हमें कि वीकली पोजीशंस कैसे काम करती है। टाइम डी के एक दिन के बाद जब दूसरे दिन ओपन होता है तो कितना होता है, और उस मार्को चैनल को कीटा का सारा समझना पड़ेगा। जस्ट टच किया रेड टू रेड और वापस ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट में फुल डे बैठा हूँ, कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस इस चीज को अपन कर पाए। अब प्रीमियम देखो, एक कैंडल में ऊपर नीचे हुआ तो प्रीमियम में यहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए का फर्क आ गया सीधा। इट्स जस्ट टेस्टिंग पर्पस, so don't complain। कितना देर रखना पड़ता है, देखा यहाँ पे कहीं दिया था मैंने, इस जगह पे कहीं जहाँ ये टूटा था। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया है, खुल गया है, फिर भी बैठा रहे उस ट्रेड में, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। और ये लो कुछ नहीं कह सकते, कितना भी टूट सकता है यार। ये टूटा 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 एक परिंदा, और इस पॉइंट तक आने का इसका फिजिक्स अगर इसमें नियम लागू होता है, वैसे तो सब जने बोलते हैं और बड़े बड़े ट्रेडर्स बात भी करते हैं। अगर स्मार्ट मनी है और बड़े ट्रेडर अगर हैं यहाँ पे एक्टिविटी में, तो वो इसको पुश करेंगे 24,949 के आसपास ले जाके छोड़ने की। 33% 0.33% के आसपास बंद होना चाहिए ये आज का ये ट्रेडिंग।
अब देखो ये नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बदल रहा है, इतना फास्ट आ रहा है। एट द मनी बदल रहा होगा फुल तेजी से, देखो चैन एट द मनी फुल बदल रहा होगा तेजी से। 84, 89, 89, 97। ये इसको टच करेगा, क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये गया, देखो ये गया बड़ा, ये कर दिया टच भाई, हो गया कि सो ट्रस्ट टच। फिर भी मैं तो लॉस में ही बैठा हूँ। तो प्रैक्टिस करने दे थोड़ी बहुत, ठीक ठाक। वहां से ये एकदम क्लियर काम करता है। मूविंग एवरेज ट्रिपल जो है एकदम शानदार वाला, और ये अगर ये टाइम फ्रेम पे अगर अपन को मिल जाता है तो सबसे वेल एंड गुड है, उसके करीब करीब कहीं पे भी। एक 135 ले गए वापस। अपन रखेंगे इसको ले ऊपर जाए नीचे जाए कहीं जाए। अभी जाने का है तो इसका 24,973 तक जा सकता है ऊपर के तौर पे भी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। कोई मुझे अपसाइड दिखती नहीं है इसमें, फिर नज़र भी नहीं है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस एरिया जाता है यहाँ पे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी तुम्हारा स्कोर पहुंच गया 24,962, 60 के आसपास चल रहा है। 24,960 अप्रॉक्सीमेट। और मेरा जो अनुमान है शायद आज ये 0.33 या 354 के आसपास बंद होना चाहिए, ये परसेंटेज के आसपास। निफ्टी तो कम से कम, निफ्टी की प्रैक्टिस है ज़्यादा। बराबर ये देखो इसी लाइन पे टच किया, जस्ट वापस आया। तो प्री ओपनिंग सेशन मार्केट कहाँ से शुरू होता है किशन? एक तो ये पॉइंट पकड़ने का, अगर तू देख रहा था डॉजी पैटर्न बना भाई नीचे से 6 मिनट पहले, और डॉजी बनते ही टूटा है। पचास मिनट की ट्रेडिंग और बची है आज के दिन की।
हम ये बड़े तेरे चाहने तो आज का जो लो था वो कितना था? 893 के आसपास था। दिन वैसे भी सामान्य रहने वाला है। चलो तब तक देखते हैं अपन कुछ और। तो इसमें हम बात करते हैं आगे इमोशनल कंट्रोल जो है ट्रेडिंग में। लालच, ग्रिड और डर जो है सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लालच के कारण ट्रेडर अधिक समय तक पोजीशन होल्ड कर सकता है जिससे कि उसको नुकसान हो सकता है। डर के कारण ट्रेडर जल्दबाजी में पोजीशंस बंद कर सकता है जिससे कि संभावित लाभ भी छूट सकता है। ट्रेडिंग भावनाओं को नियंत्रित करना और तार्किक फैसले लेना शामिल है। लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि सट्टेबाजी अक्सर अल्पकालिक होती है लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग दर्शन में दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देना शामिल होता है। तो मैं लंबे टाइम के लिए देखना है। इसका मतलब है कि ट्रेडर को हर ट्रेड को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल लाभ या हानि के रूप में। बाजार की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटिमेंट। बाजार में कीमतें केवल तकनीकी कारकों से नहीं बल्कि ट्रेडरों की भावनाओं से भी प्रभावित होती है। उदाहरण, यदि बाजार में डर का माहौल है तो कीमतें गिरती ही रहती है, गिर सकती है भले ही मौलिक कारण मजबूत हो। ट्रेडिंग दर्शन में यह समझना शामिल है कि बाजार की भावनाओं का विश्लेषण किया जाए। संयमित तार्किकता ट्रेडर को सिखाता है कि बाजार में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि मानसिकता, दृष्टिकोण। ग्राहक के इस विषय पर विस्तार से और समझना है तो कोई उदाहरण चाहिए तो बता सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेडिंग दर्शन जो विस्तार से समझते हैं साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से भी स्पष्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट सबसे बड़ी जो चीज है वो है इस बाजार की समझ। तो बाजार एक जटिल और गतिशील प्रणाली है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और गतिशील मतलब स्पीडी है। प्रणाली मतलब एक प्रोसेस है। तुम्हें भी अपने आप को एक प्रोसेस में डालना है जिससे कि इस बाजार के साथ तुम चल सको, जो कई फैक्टर्स के द्वारा इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो आपूर्ति और मांग, डिमांड एंड सप्लाई। जो आपूर्ति और मांग है वो है कि किसी भी शेयर, सोना या मुद्रा की कीमत इसकी आपूर्ति और मांग पर निर्भर करती है, या किसी भी चीज की गुड्स एंड सर्विसेज में। यदि मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है और यदि आपूर्ति बढ़ती है तो कीमत घट जाती है। अक्सर समाचार और घटनाएं, न्यूज एंड इवेंट्स, राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक डेटा, जीडीपी, बेरोजगारी दर या कंपनी के वित्तीय परिणाम बाजार को प्रभावित करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान। बाजार में ट्रेडरों की भावनाएं जैसे लालच, डर या उत्साह कीमतों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोग किसी शेयर के बारे में सकारात्मक अगर महसूस करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है भले ही उसके मौलिक कारक मजबूत न हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी ने एक अच्छा मुनाफा घोषित किया। इस खबर के बाद लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं जिससे कि मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ जाती है। लेकिन यदि बाद में पता चलता है कि कंपनी ने गलत जानकारी दी थी तो लोग डर जाते हैं और शेयर बेचने लगते हैं जिससे कि कीमत अचानक रूप से गिरने लगती है। डिसिप्लिन, अनुशासन ट्रेडिंग में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है कि नियमों का पालन करना। ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग प्लान की सख्ती से पालन करना चाहिए।
जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ बदलाव आया है, ऊपर जा रही है कीमतें, लेकिन लेट्स वेट। अभी हम अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं। तो वो शेयर, हाँ, नियमों, ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उसने तय किया है कि 5% नुकसान होने पर पोजीशन बंद कर देगा, तो उसे उस नियम का पालन करना चाहिए, भले ही उसे लगता हो कि बाजार वापस उछलेगा। भावनाओं पर काबू रखना, ट्रेडर को लालच या डर के कारण अपने नियमों को तोड़ने से बचना चाहिए। मान लीजिए ट्रेडर ने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और तय किया कि यदि कीमत 95 हो जाती है तो वह शेयर बेच देगा। लेकिन जब कीमत 95 हो जाती है तो ट्रेडर सोचता है शायद कीमत फिर बढ़ जाएगी और शेयर होल्ड कर लेता है, और यदि कीमत और गिरती है तो ट्रेडर को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह अनुशासन की कमी का उदाहरण है। एक रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन का मतलब है कि ट्रेडर को यह तय करना चाहिए कि वह एक ट्रेड में कितना पैसा खोने को तैयार है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। स्टॉप लॉस, ट्रेडर को हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए जिससे कि नुकसान सीमित रह सके। और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है? स्टॉप लॉस लगाया जाता है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको। जैसे मान लो कि मैंने 7 रुपए पे लगा दिया या 6 रुपए पे लगा दिया। अगर 6 रुपए जाता है तो ठीक है, और ऊपर की साइड पे भाव 9 रुपए जाते हैं तो टारगेट प्राइस हमेशा अपसाइड होगी, और जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस होगी वो ये होगी। तो 6.50 तक तुम ले जा सकते हो इसको, अभी हालिया तौर पे देखते हुए इस चीज को, संभावनाओं को। और ₹8.55 60 ले लो तुम इसको, तो 8.80 80 रुपीज का। तो ये टारगेट आ सकता है। नीचे की साइड ये लो, तो ये सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस के साथ लगा दिया अब अपन ने हमेशा। अब जो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टॉप लॉस करने का तरीका था। पोजीशन की साइजिंग, ट्रेडर को कभी भी अपने पूरे पैसों का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए है तो उसे एक ट्रेड में केवल 10% ही लगाना चाहिए। मान लीजिए कि एक ट्रेडर के पास 1 लाख है और वो 50,000 एक ही शेयर में लगा देता है। यदि उस शेयर की कीमत 10% गिरती है तो ट्रेडर को 5,000 का नुकसान होगा, जो उसके कुल पैसों का 5% है। लेकिन यदि वो केवल 10,000 ही लगा देता है तो नुकसान केवल 1,000 होता है, तो उसके कुल पैसों का केवल 1% होता है। तो भावनाओं का पर नियंत्रण, तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए कि तुम 1,000 का लॉस उठा सकते हो या 5,000 का लॉस उठा सकते हो, तो उससे ज्यादा करो मत जितना तुम उठा सकते हो, जिससे तुम्हें फर्क ना पड़ता हो। तो ये सबसे बड़ी मेजर रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें करना चाहिए, अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पैसा बचेगा तो ट्रेड करोगे, पैसा बचेगा ही नहीं तो ट्रेड कहाँ से करोगे। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इमोशनल कंट्रोल। तो ट्रेडिंग में भावनाएं सबसे बड़ी बाधा होती है। लालच, ग्रिड, ट्रेडर अधिक लाभ कमाने की लालच में पोजीशन होल्ड कर सकता है, जिससे कि उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्केट किसी भी समय बदलाव कर सकता है। डर, ट्रेडर डर के कारण जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर सकता है, जिससे कि संभावित लाभ छूट सकता है। उदाहरण, मान लीजिए ट्रेडर ने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा और उसकी कीमत 120 हो गई। ट्रेडर लालच में आकर सोचता है कि शायद कीमत 150 तक चली जाए और शेयर होल्ड कर लेता है, लेकिन कीमत गिर जाती है और ट्रेडर को नुकसान होता है। ये लालच का उदाहरण है। एक बाजार की भावनाओं को समझना, सेंटिमेंट को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटिमेंट। बाजार के जैसे कि उत्साह, डर या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कीमतों को प्रभावित करती है। ट्रेडर को इन भावनाओं को सबसे पहले समझना चाहिए। तो बुलिश का मार्केट है, उसकी सेंटिमेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब बाजार में लोग खरीदने में रुचि रखते हैं तो कीमतें बढ़ती रहती है। बियरिश, जब बाजार में डर होता है तो लोग बेचने में रुचि रखते हैं और कीमतें गिरती जाती है।
मान लीजिए उदाहरण के रूप में अपन इस चीज को समझ लेता हूँ, कोई बड़ी राजनीतिक घटना होने वाली है जैसे कि चुनाव। यदि लोग सोचते हैं कि नहीं सरकार बाजार के लिए अच्छी होगी तो वे शेयर खरीदने लगते हैं और कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन यदि लोग अनिश्चित हैं तो वे शेयर बेचने लगते हैं और कीमतें गिरती चली जाती हैं। तो ट्रेडिंग दर्शन ट्रेडर को सिखाता है कि बाजार में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि मानसिकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन से आती है असल में। और एक सफल ट्रेडर वही होता है जो बाजार को समझता है, अपने नियमों का पालन करता है, जोखिम को नियंत्रित करता है, भावना पर काबू रखता है और बाजार की भावनाओं को समझता है। अगर आपको और कोई उदाहरण चाहिए, किसी विशेष पहलू पर चर्चा करनी है तो बता सकते हैं। अभी बताते हैं। ये देखो, ये गया ऊपर, अपन ने छोड़ दिया उसको, अपन टेंशन में नहीं है। ये उसके ऊपर गया है, लेकिन कभी भी बदल सकता है पैटर्न। नीचे से देखा जाए तो लॉन्ग कितना हुआ ये देखते हैं। भाई तुम जो है अभी शॉर्ट सेलिंग की तरफ मत बैठना हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसने बेस बना लिया है 24,974 रुपये, और इसके आगे ये देखेगा कि किधर इसका बेस बनेगा। तो जब तक ये अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर की पोजीशन 25,000 है। जिसके हालात लग नहीं रहेंगे वहां तक ये जाएगा मार्केट इस टाइम टेस्ट करने के लिए। आज का मार्केट क्लोज होने के करीब है, मात्र 36 मिनट बचे हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है इस मार्केट में अभी भी। चलो अपन आगे देखते हैं उस किताब का अगला। वो बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में, भूमिका के बारे में। ट्रेडिंग में मनोविज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार में सफलता या असफलता अक्सर इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप किस तरीके से चलते हैं, लेकिन असल में आप अपनी मानसिकता को किस तरीके से विकसित करते हैं और क्या बदलाव उसमें जो मार्केट को चाहिए वो बदलाव आप कर पाते हैं अपने ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। बाकी तो कोई इसमें चांसेस नज़र नहीं आता कहीं सफलता होने का। जो तुम्हारे इमोशन है वो कैसे निर्णय को प्रभावित करते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पर निर्भर करती है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण साथ साथ होना चाहिए। मनोविज्ञान कारक भी ट्रेडिंग के परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कारकों का प्रभाव। क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रभाव पैदा हो सकता है। एक्सटेंड कर रहा है 296 के आसपास। कल अगर गिराना है इसको अच्छा डालना पड़ेगा।
वो उसको लंबा कर सकते हैं शॉर्ट। लालच ट्रेडिंग अधिक लाभ कमाने के लालच में गलत फैसले लेता है। शेयर की कीमत बढ़ने पर ट्रेडर उसे बेचने की बजाय और बढ़ने की उम्मीद में होल्ड कर लेता है, जिससे बाद में नुकसान होता है। ट्रेडर डर के कारण जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर देता है। शेयर की कीमत थोड़ी गिरने पर ट्रेडर घबरा जाता है और उसे बेच देता है, जबकि कीमत फिर बढ़ सकती थी। आत्मविश्वास की कमी। ट्रेडर अपने फैसलों पर विश्वास नहीं करता और बार बार अपनी रणनीति बदलता है। ट्रेडर एक प्लान बनाता है लेकिन उसे लागू नहीं कर पाता और बार बार संदेह करता है। तो यह आत्मविश्वास की कमजोरी है। अधिक आत्मविश्वास। ट्रेडर अपने कौशल का अतिरंजित अनुमान भी लगाने लगता है और अनावश्यक बैलेंस चाहिए इन सब चीज़ों का जोखिम लेता है। ट्रेडर बिना विश्लेषण के बड़े पोजीशंस लेता है और नुकसान उठाता है। साइकोलॉजिकल जो बाइसेस होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो पूर्वाग्रह होते हैं ट्रेडर के, वो जो उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। ट्रेडर केवल उस जानकारी पर ध्यान देता है जो उसके पूर्वाग्रह को पुष्ट करती है। ट्रेडर केवल उन समाचारों को सुनता है जो उसकी ट्रेडिंग रणनीति को सही साबित करते हैं। तो ये भी तुम्हारी गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ा देता है। अतिरिक्त प्रतिक्रिया। ट्रेडर छोटे मोटे बदलावों पर भी अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है। ट्रेडर छोटे उतार चढ़ाव पर भी पोजीशन बंद कर देता है। हार्डिंग प्रभाव। ट्रेडर दूसरों के पीछे पीछे चलता है बिना स्वयं विश्लेषण किए। ट्रेडर केवल इसलिए शेयर खरीदता है क्योंकि अन्य लोग खरीद रहे हैं। नहीं, वो तरीका काम नहीं करेगा। सब ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ट्रेडर को अपनी भावना पर काबू रखना चाहिए। यहाँ कुछ प्रभावी तकनीकें दी गई है। ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका पालन करें। सबसे पहले तो ट्रेडिंग का प्लान कराएं स्पष्ट रूप से। प्रवेश और निकास बिंदु, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, जोखिम प्रबंधन नियम। एक ट्रेड में केवल 1 से 2% पूंजी लगाने, ये सबसे बड़ा पालन करना है। प्लान का सख्ती से पालन करें और भावनाओं के आधार पर इसे बदले नहीं, बिल्कुल किसी भी रूप में। दूसरा है भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। ट्रेडिंग के दौरान अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। यदि आप तनावग्रस्त, लालची या डरे हुए महसूस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक ले लें। मेडिटेशन और सांस लेने के अभ्यास करें, जिससे कि आपका तनाव कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लाभ की बजाय छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य रखें, जिससे लालच कम होगा और ट्रेडिंग अधिक संतुलित होगी। यदि आपने एक ट्रेड में 5% का लाभ का लक्ष्य रखा है तो उसे प्राप्त करने पर संतुष्ट रहें और पोजीशन बंद करें। फिर आपको एक ट्रेडिंग जर्नल भी रखनी है। हर ट्रेड के बाद एक जर्नल में लिखें ट्रेड क्यों लिया गया, क्या प्लान का पालन किया गया था, हाँ या नहीं, भावनाएं क्या थी, डर की थी, लालच की थी या असमंजस में थे, क्या सुधार किया जा सकता है उसके अंदर। इससे आप अपनी गलतियों को पहचान सकेंगे और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकेंगे। ई पॉइंट जो है, ब्रेक लें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। लंबे समय तक ट्रेडिंग करने से थकान और भावनात्मक निर्णय होते हैं। नियमित ब्रेक लें। ओवर ट्रेडिंग, बहुत अधिक ट्रेड करने से बचें क्योंकि इससे नुकसान का जोखिम बढ़ता है। 3 बज चुके हैं और ये लो शॉट से नीचा 1 शॉट, और ये अगर इसको क्रॉस कर गया तो भाई क्रॉस कर गया, ये कर गया, बहुत ही तेजी से तोड़ सकता है अब ये तुमको, और यहाँ के लाके पटकेगा। ये लाया और इसकी कैंडल अगर नीचे बनी तो फिर गया। हल्का पुल बैक था। पहला टारगेट हिट हो गया इसका, दूसरा गया, दूसरे की ओर बढ़ रहा है ये। किताबें पढ़े, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की ट्रेडिंग मनोज्ञान पर किताबें, सफल ट्रेडरों के अनुभव से सीखें। कुछ प्रसिद्ध किताबें भी हैं इनके बारे में।
निष्कर्ष ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनाओं को नियंत्रित करना और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से बचना सफल ट्रेडिंग का आधार है। एक अनुशासित और संतुलित ट्रेडर ही लंबे समय तक बाजार में सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको और कोई तकनीकी उदाहरण समझना है तो बता सकते हैं। एक दिन यहाँ दैनिक साप्ताहिक लक्ष्य तय करें। एक दिन या सप्ताह में कितना लाभ करना, इसका लक्ष्य करें। मैं इस सप्ताह केवल 2% लाभ कमाऊंगा, सिर्फ 2%। लक्ष्य प्राप्त होने पर ट्रेडिंग बंद करते हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो ट्रेड ना करें। उदाहरण, यदि आपने 2% लाभ कमा लिया तो उस दिन आगे बैक पर कोई कमा कर यदि अपने 100 रुपए के 110 पर बेच दे, भले ही आपको लगता हो कि कीमत 120 तक जाएगी। 0.33 पे जाके रुकेगी चीजें। Just too short and give them hit hard hitting. अब बेस बना लिया इसने। लास्ट मोमेंटम ट्रेडिंग है ये। ये गिरने नहीं दे रहे हैं इस चीज को, देखो से बोलते हैं ट्रेडिंग। हमने बहुत दूर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था 24,650, जहाँ से प्रीमियम वैसे भी नहीं बढ़ते। लेकिन नुकसान भी कोई बड़ा नहीं है क्योंकि अपन ने उतना ही किया था। तो कोई कहता है कि फायदा ही होता है, तो भाई नुकसान भी होता है। फायदा नुकसान दोनों होते हैं और नुकसान ज्यादा होता है। बेरा ना तो बेरा कर लिए तो पाड़ जाएगा। ट्रेडिंग, हर ट्रेड का रिकॉर्ड करें। Give me in Excel format with columns you suggested. Trading journal template. Selling.
Angry token name, price, position size, technical fear grid, nodes, improvements. Okay, great. This is open and open. Analyze your performance improvements. गिर रहा है ना तो गिर रहा है ना तो गिरना, चला जा अपनी जगह पे। यहाँ से तो उठ के आया है। जाना तो पड़ेगा ऊपर के लिए तो मैं ट्रेड रहेगा नहीं इस टाइम के लिए। लेंगे तो जाएंगे तो नीचे। जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। मार्केट कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे नहीं, सारा कुछ आज एनालिसिस, इसके बाद पोस्ट एनालिसिस सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, कैसे मार्केट का क्या रहा है। आज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझ में आ रही है कि टाइम डी के कैसे हो रहा है अभी अच्छे से। ये थोड़ा सेशन कंप्लीट चल रहा है। वो एक ये गया डाउन साइड, डाउन डाउन, नीचे जा भाई, हाँ नीचे जा नीचे जा नीचे जा, जा नीचे तुम। नीचे ही जाना है, सुने ना क्या।
10-12 मिनट बचे हैं, तो देखते जाओ। आज का मार्केट पूरा रिकॉर्डिंग हुआ और अपलोड हो जाएगा। कभी भी फ्यूचर में अपन को एनालिसिस करना पड़े तो हम एनालिसिस कर सकते हैं इसको, आज के दिन का पूरा इस तरीके से कि हमने उस दिन कैसे मार्केट को देखा था, कैसे अप्रोच किया था। आज की तारीख है 25 अगस्त 2025। मैं बैठा हूँ नीचे जगह पे सेटअप पे। अब ये यहाँ आए तब बात बने, इतना नीचे गिरेगा नहीं अभी किसी भी हालात में नहीं, ना नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा। यहाँ तो 50 तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
पोजीशन देखते हैं आज की 198 माइनस। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, फर्दर एनालिसिस करेंगे, देखा जाएगा बाद में।